toss, and after winning the toss, captain of Red Wings, Kunjat Bail, won the toss, and they elected to field first. Thank you. They will go into ball first, and Jolly Friends will go into bat first. What a match you witnessed yesterday. And Gopi, yesterday is one of the fascinating day of cricket, isn't it? What a fantastic finish for the last semi-final. And because the Tajuddin, Tajun is the man who is responsible for postponing the match for today, because everyone thought the match is over and Red Wings definitely going to be in the final. But one ball, and that really changed the complexion of the match. And more than anything else, Gopi, that 1-6 become a very popular. Along with Tajuddin, your commentary also become viral in the last day. And everywhere you can see that in the social media, you just open Facebook or any Instagram, your voice and Tajuddin strokes, which has become very popular. Exactly. Exactly, Satish. What you are told. तो जहाँ तक ताजुद्दीन और जॉली फ्रेंड्स बजाल को ताजुद्दीन का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि आज वापस उन्हें खेलने के लिए मिल रहा है. अगर ताजुद्दीन छक्का नहीं लगाते तो जॉली फ्रेंड्स खासकर इस श्रृंखला से बाहर होते. लेकिन यहाँ पर टुडे इज अ डिफरेंट डे और यहाँ पर दोनों संतुलित टीम है. विजय की संभावनीयता है 50-50. इट्स गोइंग टू बी 50-50. और रेड विंग्स कुंजत बैल इस वक्त टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया. तो यही उनकी रणनीति होगी. कल पहले बल्लेबाजी उन्होंने की थी और अंतिम गेंद पर जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाज ने मैच को टाई किया था. तो यहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि एक बार फिर से वो बल्लेबाजी करें. और तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद. और जॉली फ्रेंड्स इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ, तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज का इंतजार रहा है. और आज की संभावनीयता के बारे में जैसे कि मैंने अभी चंद लम्हों पहले फरमाया सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50. 50-50% की संभावनीयता. और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आज हमें एक रोचक और बेहतर क्रिकेट यहाँ पर 2 मैचेस में देखने को मिलेगा. Absolutely, Gopi. And of course, talking about Tajuddin, it's become a nightmare for most of the players of Red Wings, especially I think the bowler Kiran, because nothing wrong with the line of the delivery. I watched Gopi after I went home. I'm just watching the kind of stroke which is played by Tajuddin, whether anything wrong with the delivery of which is last ball by Kiran. It's absolutely ball which is came along the carpet, isn't it? And he just lofted that one, an unbelievable struck. And even after I'm seeing that, after hitting the ball, he just lost his grip over the handle. And I'm very surprised where he got that much of power to get that distance, which is very difficult in the evening where there is no wind at all on the ground. And just seeing the softness of the ball, and he is definitely the hero of the day number 3 yesterday's match, and has become popular. But just like you're mentioning about Gopi, different game. Every day is not a Sunday. And today definitely they're going to be a different day, and both the teams will definitely came in a positive frame of mind, different strategy, different statics they will going to implement to qualify for the semi-final. And what we're talking about different day, we are talking about different strategy, different game plan they need to implement. And just like you mentioned about Gopi, after winning the toss, Red Wings captain elected to field first because they doesn't want to Tajuddin to bat second. We're going to be the finisher of this match. And wait and see. So Red Wings and Jolly Friends, 2 teams, absolutely they got opportunity, the balancing team. And Jolly Friends always they're playing with the home condition. They're playing again with some crowd support here, because whenever the teams which is playing in a home condition, definitely that is understandable that they will get more support from the crowd, that their home team will go into qualify for the final. That's why I think Red Wings they need to play very well if they wanted to qualify for the finals. At the same time, Jolly Friends Mantur, they need to continue the performance what they left yesterday, and if they manage to continue that performance in this particular day, then it's going to be a fantastic day for cricket once again. So Jolly Friends Nantur, 2 opening batters came into middle. Tajuddin, the hero of the yesterday, is on strike, and Azim is a batter, is in non-strikers. And 550 viewers before start of the match, just waiting for when Bedra Media will go into live telecast this cricket tournament. And the waiting is over, and here you go, that the semi-final will going to start here
And welcome back for all cricket lovers for this prestigious tournament. And welcome back those who are watching live telecast of this prestigious cricket tournament through Bedra Media in YouTube channel. So welcome back. Good afternoon, everyone. And we are going to start the semi-final. Here is the first ball of the day number 4 and last semi-final, day number 4 and last day of this cricket tournament and last semi-final of this tournament. First run, Tazuddin is off the mark with the single, and Jolly Friends is off the mark and they open the count as well. One without loss of any wicket in the over number first in progress. Captain of the side, I think so. Ranjit will go into starts the proceedings as always, as the ball first ball and he conceded a single. Second time in this over, bowling away from us in the power play overs. Right arm over the wicket to Nazir. Azim this time reverse sweeps that one. One of his favorite shot. He is so good in it. No hesitation at all whenever he is trying for that kind of cricketing stroke. He is a very strong behind the wicket and square of the wicket. And this time he is confident looking reverse sweep. Picked up a single for that. With that single score Namuzan to 2 on the board without loss of any wicket. Ranjit again back to his bowling mark. Short run up. Right arm over the wicket to Tazuddin. Tazuddin drives it and up and over and down to deep cover region before the cover point fielder to run back to field the ball. Ample time for the complete a couple of runs. Then the supporters of Jolly Friends, definitely they got a heart in their mouth when the throw which just came from the fielder down at backward point cover point region, but at the last moment he's managed to complete a couple of runs. So with that couple of runs covered, Namuzan to 4 on the board. And without loss of any wicket. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಲವು 4 ವೀಲರ್ಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಾಹನ ಮಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಡುವಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. So Tazuddin will go into face next delivery from Ranjit. This time down the leg stump, going to be a punishable from the umpire, not from the batter Tazuddin, because that ball is outside the run of the leg stump and further away because of the direction of the wind, really getting some extra turn, extra encouragement for in-swing delivery, which is a bowler tried in the irrigation, Ranjit, and he couldn't manage to control that line. One more addition with that single score, but Namuzan to 5 on the board. Again outside the run of off, going to be a one more extra. The bonus run here for Jolly Friends. This looks like Ranjit little bit struggling out here to get the line and length proper. Again he's just tried to bowl that on outside the line of off time. Couldn't control that line. And two more extra added to total. 1 + 1 always going to be a frustration for the captain of Red Wings, as scoreboard is Muzan to 7 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. So here is announcement for every 6 hit by any batsman of Jolly Friends will going to get 1,000 rupees cash prize, which is announced by Zunaid Bajal for the batsmen of Jolly Friends. Going for the sweep shot, and this time he missed it completely. First time I was seeing that the batsman Azim fails to make a contact with the bat when he was trying for the sweep shot. And with that dotted delivery, score remains on 7 on the board. Ranjit back to his bowling mark. Of course, he is looking for some dotted delivery in this over, looking for some breakthrough in this particular over. And here is again Ranjit away from us. Right arm over the wicket, balls, reverse sweeps comes into play. Once again, he just beats infield, not really having that much of timing in that reverse stroke. But he managed to send that one between cover point and backward point region. And before that fielder from extra cover region to run back to field that one. Ample time for the batter to complete the single. So with that single score, Namuzan to 8 on the board. Still it's one more delivery left in this over. It's a prolonged over, as the fact that he's bowled 2 extra deliveries. Whenever it's bowling a 2 extra deliveries, always going to be a bonus and opportunity for the opposition to grab that 2 deliveries. Of course, they got some extra runs in the form of wides and buys. At the same time, they will going to get extra deliveries as well. This is one point I think the batting team need to capitalize that extra deliveries which is bowled by the opposition. Again, a bowler bowling Ranjit right now over the wicket. Little
little bit short pitch delivery, but Tajuddin couldn't manage to get the timing behind the stroke because that ball is little surprised the Tajuddin because that ball came along the carpet when he was going for the drive. That ball got a little bit extra bounce so that he couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. From the point of view of Jolly Friends, the completion of over number 4, Jolly Friends have got a decent start, 9 without loss of any wicket. And Gopi 9, always it's a very good start as far as the 5 of a game is concerned. And considering the fact that Ranjit is always starts well, and at a less occasion watching that is giving more than 6 runs per over. But in this particular over, I think Jolly Friends they got what they really wanted in the first over of the power play. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया पहले ओवर में 8 रन जोड़ चुका है इस वक्त जॉली फ्रेंड्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट इन 5 overs format, 9 in fact, and this is going to be absolutely a fantastic start in 5 overs format. और जहां तक सवाल है बचे हुए 4 ओवर का, तो इस वक्त देखना है कि बचे हुए 4 ओवर में अगर इसी औसत के साथ वो रन्स बनाते हैं तो 45 तक पहुंच सकते हैं, और 45 चुनौती भरा स्कोर यहां पर कहलाएगा इन हालातों में. तो जहां तक रंजीत का सवाल है, पहले ओवर में कुछ हद तक महंगे वो साबित हुए, लेकिन देखना यह है कि अब आने वाले गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, और जहां तक कम से कम स्कोर पर जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है, तो एक बेहतरीन वापसी किफायती गेंद के जरिए इस वक्त करनी होगी रेड विंग्स कुंजत बैल के गेंदबाजों के लिए. Exactly, Gopi. They got a start, but they need to continue their start what they got in the first over. And consistency is going to be very important here for Jolly Friends if they wanted to get some good score, because they desperately wanted to get a good score because Red Wings Kunjat Bail they got a formidable batting department, an experienced campaign in the side. That's why Jolly Friends are suddenly looking for some good score here. Again, first ball of the second number over, first ball of the over number second. The Vignesh. Yajnesh brought into attack, and Yajnesh bowled at a full toss delivery, and batsman Tajuddin plays it down to third man region by playing the reverse sweep, premeditated reverse sweep, because that was a full toss delivery. But as the fact that batsman tried for the premeditated reverse sweep, he managed to get a single for that full toss delivery. Again went for the receive shot, appeal for leg before wicket, a loud appeal, confident appeal there from Yajnesh, but umpire, look at that one, no signal which is came from the umpire. That means the batsman has got a little bit inside edge of the bat, saving in from leg before wicket. Yajnesh is very confident, just more than the wicketkeeper behind the stump. He's just going on, asking umpire, begging for umpire to give the leg before wicket, but rightly so, umpire sees that ball is just got inside edge of the bat, saving the batsman from the leg before wicket. With that single, scoreboard numbers on to 11 on the board, without loss of any wicket. Yajnesh again, left arm round the wicket. He balls. This time ball is in the chance of catch there. The wicket keeper behind the stump, and the bowler has got a lot of misunderstanding. Definitely it's going to be a miscommunication and misjudgment, because wicket keeper thought it might be the catch of the bowler, and bowler thought it might be a catch of the wicket keeper. So that was a lacking in the between that. That's what I'm always saying in cricket, the loud calling. If you are catch, you should tell your partner, it's mine, leave. That's what's happening between these two fielders. Ball is in there for a while, both the fielders are trying for the catch, and both thought that it might be a catch of there, and the ball just landed safely between that two fielder. Again swept that one quite safely, and ball went towards a deep fine leg region for a declared area for a single. With that single, scoreboard numbers on to 13 on the board. Runs are coming very freely here for Jolly Friends. The opening batters certainly they wanted to get the start. They tried to lay the foundation without losing any wicket. I think it's a very good start given there by these opening batters of Jolly Friends. Again, Yajnesh, very talented bowler for the side of Red Wings Kunjat Bail. Left arm balls, that was a beauty, absolutely beauty of delivery, but it's not a beauty of thinking there from the fielder what could be a certain dotted delivery. Because of that was an experiment there by the fielder, that short fine leg and tried to make the run out, but his overthrow comes into play, and Kunjat Jolly Friends has got a one more gifted runs in the form of overthrow. Each and every run Jolly Friends will going to enjoy, because of they knows that this is a big semi-final. They need to get some good score here. And over number 2 is in progress. Scoreboard is 14 on the board. 14 without loss of any wicket here in over number second in progress. Coming back to Yajnesh, is in the very less time is becoming very popular because he represents one of the top team in the last season. That is Young Friend Surva.
and end of the season. He's been very effective with this bowling. He's a very, very talented, not only very good bowler, but he's a very talented left-hand batsman as well. And now he's playing for Red Wings Kunjat Bail. But now hero of yesterday, Tajuddin, allowed a bill from in front of wicket. This is absolutely flum in terms of wicket. The reason Tajuddin shuffled across the line of the delivery. He shuffled across the line of the delivery. This is the right call, I think so, from umpire Anif, seeing that Tajuddin just wanted to. Just I want to see it in a replay because even by the naked eye, you can judge that ball is definitely going to be hit the midland leg stump. Just I want to see it in a replay and just look at it in a monitor screen. Here is oh, that was a flum, absolutely flum, no doubt at all. The good decision which came from umpire Anif. And so far, Gopi, it's in this particular tournament, I want to say that, of course, they are all the experienced umpires. Of course, leading from the front, Iqbal and Nasir Bajal and Anif. Now we're talking about Abdullah, but Anif Bajal, Gopi, we never see him in anywhere, but in this particular tournament, I think he's been outstanding. His decision is so good, and definitely it's going to be he got a future. He's got a future as one of the good umpire because of the decision what he's giving. Absolutely, the body language what we are watching, what Anif is giving, is definitely going to be the future umpire for underarm cricket. बिल्कुल सतीश, हनीफ बजाल जो कि एक उभरते हुए अंपायर है आज के अंडरआर्म क्रिकेट में और निस्संदेह एक बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल चुना गया है इस श्रृंखला के लिए। श्रीमान इकबाल, श्रीमान हनीफ और जनाब अब्दुल्ला और उसके बाद चौथे अंपायर जो है जनाब नासिर बजाल। तो ये चारों अंपायर्स अपना किरदार बाखूबी अदा करते हुए इस श्रृंखला के लिए और खासकर हनीफ बजाल के बारे में जैसे कि आपने फरमाया, निस्संदेह आज के अंडरआर्म क्रिकेट के दौर में एक उभरते हुए अंपायर है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में उनका अंपायरिंग क्षेत्र में उनका भविष्य उज्ज्वल हो। तो यहाँ पर जहाँ तक इस मैच का सवाल है तो 2 ओवर में अच्छी खासी रन इस वक्त कर लिए जॉली फ्रेंड्स बजाल ने, 14 रन जोड़ चुका है और देखते हैं 3 बचे हुए ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Exactly, Gopi. But it's a comeback over which is bowled by Yadnesh. It's a quiet over. Just 5 runs which came from that over. And Ranjit will going to continue from the commentary box. And the 3rd over of the innings of Jolly Friends. Wait and see how these 2 batters will going to continue what the start given by the opening batters. Again, looking for the reverse sweep. But that punishable again from umpire Nasir Bazal in the negation. That ball is going further outside the line of off-time batsman. Azima wanted to play the reverse sweep but misses the line completely. Then wicketkeeper not really missing the opportunity to collect the ball, and Ashwin back to bowler Ranjit again, right arm over the wicket, swept that one very nicely down to square leg region. Behind the square there is a deep backward square leg fielder is there in the position. Arshit is a very good fielder in the deep and no chance at all for second run whenever he is in action, and the batsman have to settle for the single. With that single, score numbers on to 16 on the board, 16 for the loss of the big wicket, the big fish in the net catch in the previous over, and Tajuddin is a hero of yesterday's back into pavilion. It's not a good news for the fans or followers of Jolly Prince because Tajuddin, they wanted Tajuddin to stay in the middle and play a big role in this particular match. But again, lovely delivery there from Ranjit, the batsman again, the new batsman, Shahil. Of course, whenever that's always the scenario we are watching. Whenever the settled batsman back into pavilion, whenever the new batters coming into the middle, that time the level of confidence is going to be very high from the bowler because he knows that he's going to bowl to the fresh leg. The batsman coming to the middle is not so easy because it's always going to be a mind game, the fresher game, and need to deal with that all pressure and right time for the bowlers to bowl some good deliveries and the dotted deliveries. Again, score remains on 16 on the board. 16 again, right arm over the wicket bowls. Again, one more dotted delivery almost, but wicketkeeper behind the stump. Oh my goodness, Ashwin is not happy with the Ranjit wicket. Of course, there's a fumble from the bowler, but Ranjit has got opportunity, Gopi. Ranjit has got opportunity to collect the ball and make the run out, but he started to blame wicketkeeper in the negation. This is what is called the absence of mind, isn't it? You blame afterwards, but you do your duty first. And here is the same thing has happened. The fumble from wicketkeeper. And he started to blame, but ball is almost not too far from the bowler. He can try for the run out, but here is a two back. Both the batters is completed a single run. With that single run, score numbers on to
Um, 17 on the board, 17 for the loss of one wicket. Umpire, please stop the match.
ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Well, match will going to start very soon, and Gopi, and just coming back to some international cricket experiences, and just coming back to the Boxing Day cricket, and always when it's coming to the Christmas Day, there will be always in Australia there will be a Boxing Day cricket, and so far I think South Africa having a tour of Australia, and Boxing Day cricket is just going on, and a very important record which is made in that Boxing Day cricket is David Warner is playing his 100 test and he scored a double century, 200. It's been outstanding, and I think is my best of knowledge is a few players who are able to score 100 in their 100 test matches, and David Warner is one of them. And I think more than me, you know everything about that. The remaining players who scored 100 in 100 test matches. एग्जैक्टली सतीश, डेविड वार्नर ने कल बॉक्सिंग डे टेस्ट में 200 रन बनाए थे और अपने 100 टेस्ट 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो कि हैं इस वक्त, जहां तक का सवाल है, कॉलिन काउडरी जिन्होंने पहले 100वें टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे. उसके बाद जावेद मियांदाद अगेंस्ट इंडिया एट लाहौर इन 1989. आफ्टर दैट 100वें टेस्ट में दोनों पारियों में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज थे रिकी पॉन्टिंग, 120 एंड 143 नॉट आउट अगेंस्ट श्रीलंका. तो उसके बाद करीबन 8 से 9 खिलाड़ी, खासकर ग्रेम स्मिथ, हशीम आमला, इन लोगों ने अपने 100 टेस्ट 100वें टेस्ट में शतक लगाया है. तो कल उस लिस्ट में डेविड वार्नर का नाम शामिल हुआ है. काफी प्रतिभान्वित आरंभिक बल्लेबाज. जहां तक सवाल है डेविड वार्नर का, तो निस्संदेह एक ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं. खासकर जहां तक मार्क टेलर का रिटायरमेंट जब से हुआ है तो उसके बाद कई आरंभिक बल्लेबाज देखे, जैसे कि जस्टिन लैंगर आरंभिक बल्लेबाज थे, मैथ्यू हेडन, और उसके बाद आखिरकार डेविड वार्नर अब यशस्वी आरंभिक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. तो
इस वक्त कल बॉक्सिंग डे टेस्ट में डबल दोहरा शतक लगाकर उन्होंने 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में अपना नाम बना लिया। और गॉर्डन ग्रीनिज भी बल्लेबाज है, और गॉर्डन ग्रीनिज एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपने 100वें एक दिन और 100वें टेस्ट मैच में भी, दोनों फॉर्मेट में भी शतक वो लगा चुके हैं। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है। He scored 100 runs in his 100 one-day international and also in 100 test, and he became the only player to score century in one-day and test both format इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यहाँ पर जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सवाल है, कई ऐसे यहाँ पर कई ऐसे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं जो क्रीडा प्रेमी नहीं भूल पाएंगे। तो जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सवाल है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लौटते हैं यहाँ पर अपने लोकल क्रिकेट में, जो अंडरआर्म क्रिकेट के बारे में। तो अंडरआर्म क्रिकेट में भी कुछ ऐसे जहाँ तक सवाल है, कैसे कुछ अचीवमेंट दर्ज हुए हैं जिसे कभी भी अंडरआर्म क्रिकेट प्रेमियां नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, तो इस श्रृंखला के बारे में अगर कहा जाए तो नेत्रावती ट्रॉफी फ्रेंड्स शांतिनगर ने एक बेहतर तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन किया है, और ये श्रृंखला का द्वितीय सेमीफाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक त्यौहार भरा माहौल यहाँ पर छा चुका है, फेस्टिवल एटमोसफियर इस वक्त इस मैदान पर। कुछ हद तक बातचीत जरूर जारी है, बाधा कुछ हुई है इस मैच में, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ सुसूत्र होकर आगे बढ़े, और आखिरकार ये श्रृंखला एक सफल श्रृंखला के रूप में दर्ज हो अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में। तो अभी भी मैच रुका हुआ है, और देखते हैं इस मैच की वापिस ये मैच कब शुरू यहाँ पर होता है। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे, आपके साथ यानी सतीश के साथ। धन्यवाद। Exactly, Gopi, and you need to appreciate that organizers of Nethravathi Trophy 2022, because yesterday, Gopi, actually is the final day of the cricket, but seeing the fact that there's a bad light and they doesn't want to see that the final will be of 1 hour, 2 hours, so they wanted to organize the real cricket, the clean cricket. That's why they're postponing. Even of course, postponing one day means it is very expensive, Gopi. It's not so easy for the organizer, and I think organizer did a great job by postponing that one for another fresh day, and so that the cricket lovers will going to get the good cricket and real cricket. So well, just coming back to the addition of umpire and organizers after having some conversation and just seeing the fact that yesterday the organizers mentioned for both the teams that you should play the same team, playing 11 for the very next day, and but Red Wings I think they fails to present the all 11 squad which is played same team which is played in yesterday, but one player is I think is not in that playing 11, so that decision from organizer as well as for the umpires that there will be a penalty of 9 runs, and 9 runs penalty which is going towards Jolly Friends. They will go and get 9 extra runs for that in this particular innings. So please note, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, 9 ರನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟಕರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಸರಿರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರು ಗಳಿಸಿ 5 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದವರು 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ರನ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದವರು 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. So whatever the score which is scored by Jolly Friends in 5 overs, Red Wings need to get that runs in 4 overs, and that means it's a penalty of 1 over. The 1 over which is a penalty which is directed from the innings of Red Wings. ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ದಯಮಾಡಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಫೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರು ಕೆಲವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಚೆಂದಗಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ So umpires get ready here and match will going to begin. So everything is ready here as Ranjit will going to continue with the third over. The match which is resumed and the time of match which is
stopped when the bowler is bowled 4 deliveries of the third over, and he will go into ball 3 deliveries. In fact, he will go into ball fourth over. So 4 bowlers what for uh, Jolly Friends. The 4 overs match, 4 bowlers. 1 bowler will going to get 1 over each. That is only for Jolly Friends Kunjat Bail. Last 3 deliveries left in this over. Ranjit, right arm over the wicket to Azim. Bowling away from us. Right arm over the wicket to Azim. Pass the umpire. Went for the reverse sweep. Wicket keeper fails to collect the ball. Oh, that's a big mistake. By call by umpire. Again, Ashwin behind the stump fails to collect the ball. And sometimes it's very difficult for wicket keeper because the batsman tried to play the reverse sweep. Is coming right in front of the bowler, so that time very difficult for the bowler to judge the line of the ball. And now Ashwin sacrificing his position to Ashok, the captain of the side, is going behind the stump to keep the wickets, and bowler Ranjit will go into bowl. Scoreboard is 18 on the board, 18 for the loss of 1 wicket in the over number Ranjit again, bowling with a short run up to Sahil. Sahil, just the new batsman came into middle, facing next delivery of Ranjit. Again, lovely reverse sweep. Is looking for a wicket keeper behind the side, fails to collect ball, chance of run out, and I think this time umpire asking for the third umpire. Looks like the batsman is in trouble. He is walking. He himself is walking towards the pavilion. He is not really waiting for the third umpire decision, and you know exactly he's out of the crease. And maybe the umpire seeing that ball is slipping out of the hands of the bowler, but I think along the ball he's uprooted the stump, and that's what but umpire need to see, the third umpire, because already given that to the third umpire, and umpire decision is a pending here and is out. The third umpire decision is out, and rightly so. And I should appreciate that the batsman Sahil, because he know exactly that is out of the crease, and you know exactly ball which is hits the stumps, then ball ball which is missed out by, after that bowler ball missed from his hands, but it's the legal it's out, and is back into pavilion. The 1 more wicket is back into pavilion of Jolly Friends. Scoreboard is 18 on the board, 18 for the loss of 2 wicket. Last delivery remaining in their inning in the celebration, that particular over. 5 overs match. This is the third over is in progress, as I mentioned earlier. 5 overs for Jolly Friends, but Red Wings have to chase those runs in 4 overs, and just like the Duckworth Lewis method. Right arm over the kitty ball. Sub that one. Ball is in there, down to square leg region for a single. With that single, scoreboard numbers and to 19 on the board. 19 for the loss of 2 wickets. So good over from Ranjit, and after completion of 3 overs, and 5 runs which came from that over. 9 in the first, 5 in the second, and 5 in the third, and altogether it's 19 on the board, and 19 on the board go by 6.33 runs per over. The run rate progressing here for the Kunjat Bail repercussion for team or Jolly Friends. And what you could think it's going to be a good score, might be a good score, because they have to play another 2 hours, and but Red Wings have to get that one in 4 overs, isn't it? बिल्कुल सतीश, 19 रन 3 ओवर में एक बेहतर स्कोर कहला सकता है, और अगर बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 15 से 20 रन बटोरते हैं यहाँ पर जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाज, तो एक चुनौती भरा लक्ष्य वो प्रदान कर सकते हैं। और खासकर उनके लिए इस वक्त धनात्मक प्लस पॉइंट ये है कि रेड विंग्स को सिर्फ 4 ओवर ही खेलने हैं, तो इस वजह से कम 35 का स्कोर भी वो पार कर जाते हैं, तो एक इट्स कुड बी अ कॉम्पिटिटिव टोटल इन दिस ट्रैक एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है इस वक्त चौथे ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हैं। रिवर्स शॉट गेंद को खेला, इस वक्त कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, डीप कवर पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं, हर्षित, और बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
सफवान, और जबकि नॉन स्ट्राइक पर हजीम हजीम तो हर्षित इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, वाइड का इशारा, 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। तो 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, एक 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है कम से कम स्कोर पर रोक कर रखने का, तो रेड विंग्स को कम से कम 30 रनों के अंदर इस वक्त जॉली क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है, क्योंकि उनको एक ओवर कम खेलना है जॉली फ्रेंड्स से, तो इसकी वजह से उन्हें एक बेहतर गेंदबाज यहां पर करनी होगी। फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके, रन नहीं मिलेगा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, अंतिम क्षण में गेंद को उछालना चाहता चूके, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो फिर से एक बार हर्षित तक गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। लॉन्ग ऑन डीप विकेट डिपैक स्क्वायर लगता है, जबकि ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहे, एक बार फिर से बेहतर गेंद थी, गुड कम बैक, 2 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हर्षित अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद को स्वीप किया, शॉट स्क्वायर की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 23 रन। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज यहां पर अपनाते हुए और 23 रनों पर इस वक्त स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज हर्षित अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, सफवान अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, सफवान इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस वक्त हर्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्कूप कर दिया, गेंद जाती हुई नेट पर, 1 रन 1 डिक्लेयर्ड इट और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त रुक चुका है, बढ़ चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, तो अंतिम गेंद बाकी और इस वक्त अंतिम गेंद लेकर हर्षित इस वक्त यार, दूसरी गेंद इस वक्त मंगाई गई है और दूसरे गेंद को इस वक्त लगभग उसी रूप में लाकर घिसने के बाद अंपायर इस वक्त लौटाते हुए गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज हर्षित इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद इस वक्त गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग, बिल्कुल जमीन के सहारे अलोंग द कार्पेट गेंद को फेंके थे, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। तो सतीश एक बेहतर ओवर, एक्सेप्ट ही बोल्ड 2 वाइड्स, ही बोल्ड ब्रिलियंटली इन दिस ओवर। अगर वो 5 रन सिर्फ प्रदान किया, अगर 2 वाइड रन को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो सिर्फ 3 रन इस ओवर में हर्षित ने प्रदान किए हैं, तो मैं कहूंगा अंडर प्रेशर ये एक बेहतर ओवर कहलाएगा। Exactly, Gopi. It's under pressure because he didn't bowl so far in this particular tournament. Actually, the first time he's introduced in this particular semi-final match. I think he's just justifying the decision of their captain to come and bowl that very important over. But at the same time, Red Wings knows that the dangerous of conceding so many runs because they're playing less, 1 over less, and they need to get a target in 4 overs. That's why they're trying as much as possible to restrict the runs. And outstanding, Gopi. Ashit bowled a very good over. But it's a last opportunity for Jolly Friends to get some acceleration because they got a last over, and Kiran, the hero so far in this tournament, but in the 1 ball he's become a villain, but now it's once again justify, he need to be definitely the hero for Red Wings. एग्जैक्टली सतीश, और इस बीच ओवर की पहली गेंद किरण की गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, इस बार यह विकेट यहां पर गिर चुका है, गेंद को बिना देखे रन लेने की कोशिश की थी और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। तो यहां पर 3 ओवर के बाद एक बेहतर कमबैक कर चुका है रेड विंग्स।
Nandan seems to be perfect. What is the situation? Engine had good problem, huh? Striker out, striker out ainata. Out not out and run out. Run out. स्टंप आउट और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है अजहर इस वक्त क्रीज पर मौजूद और स्कोर कुल मिलाकर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और अजहर का आगमन यहाँ पर हो चुका है तो पांचवा और अंतिम ओवर की पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हालांकि पिछले कल के आखिरी मैच में अंतिम गेंद पर किरण ने छक्का जरूर प्रदान किया था लेकिन किरण एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि एक बेहतरीन गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं और यहाँ पर इस ओवर में भी वो अब तक बेहतर गेंदबाजी कर चुके हैं और जहाँ तक सवाल है अगली गेंदों का तो यहाँ पर अगली गेंद लेकर किरण इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लगभग जमीन के सहारे वो ज्यादातर गेंद फेंकते हैं दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त गेंद जाती हुई गली की दिशा में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है यहाँ पर 25 रनों पर स्कोर पहुंच चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर 25 for 3 wickets in the over number 5th and last in progress again हल्के रन आउट वापस लौट और यहाँ पर जॉली बॉयज बजाल यहाँ पर अपना विकेट खो चुका तो निस्संदेह बेहतरीन रन आउट सतीश जिस तरीके से परसों पूल के मंसूर ने जिस तरह से छलांग लगाकर रन आउट किया था उसी तरह से इस वक्त रन आउट किया उनके पर रन Absolutely. Mirror display of the what Monster is which is coming from Ashok. All the ball is floating on the air when he was trying to make a run out. Absolutely fantastic work done by Ashok in the region. And I think difference losing the momentum what they really got in the 2 overs. The runs which is not really coming very fit. And once again the bowler is proving very well. Kiran in this over is very effective and job is not yet our Gopi. Wait and see. को खेला लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच और 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 20 रनों पर इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ फ्री विकेट विद बॉल्स गो इन द अब बाकी उनकी पारी में और किरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त जो कि सामने के लिए तैयार
सफान सफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, उनकी पारी में बाकी किरण तो विकेट, ये गेंद इस बार गेंद लेने के प्रयत्न करते समय यहाँ पर विकेट गिर चुका है। 28 रन बन चुके, 5 विकेट के नुकसान। अंतिम गेंद के इज नाउ इन द और कि इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज कितने रन पर बटोर पाते हैं। तो इस वक्त 28 रन बन चुके हैं और नए बल्लेबाज नंबर 22 की जर्सी पहने इस वक्त मैदान पर उतरते हुए द्वितीय सेमीफाइनल में नेत्रावती ट्रॉफी 2022 इस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर प्रस्तुति कर चुके हैं फ्रेंड। और यहाँ पर इस द्वितीय सेमीफाइनल दूसरे सेमीफाइनल मैच की विजेता टीम इस श्रृंखला के मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले में एनएम मैंगलोर का मुकाबला करेगी। अंतिम गेंद इस वक्त लेकर किरण तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, absolutely brilliant work made by the wicketkeeper behind the stumps. Clean collection and flicking flattered the wickets very quickly. Brilliant piece of stumping, and the innings is up. Their stipulated overs are completed, and they finished with 26 in fact. 28 in fact, 28, they finished with 28 for 5 in the stipulated 5 overs, and now the target for Red Wings Kunjat Bailey is 29. तो सतीश 28 रन बना चुके हैं, 29 रनों का लक्ष्य, लेकिन the question stands here, they have to score 29 in not in 5 overs but in 4 overs. तो 5 ओवर में अगर 29 रन बनाने होते तो रिक्वायर्ड रन रेट होता 5.80 रन प्रति ओवर। अब 5 ओवर में 29 रन बनाने होते तो रिक्वायर्ड रन रेट होता 5.80। रन है 29 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज, और मैं समझता हूं रेड विंग्स के पास कुछ ऐसे बल्लेबाज मौजूद है जो एक बार अपना क्रीज पर अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। और जिस तरीके से इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट में रेड विंग्स के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन दिया है, मैं समझता हूं ये एफोर्डेबल टोटल है। और जहां तक जॉली फ्रेंड्स बजाल का सवाल है, इस वक्त उन्हें रेड विंग्स के बलाढ्य बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर अंकुश लगाना है तो पहली ओवर से एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी। मैं समझता हूं उनके गेंदबाजों में ऐसी क्षमता मौजूद है कि बल्लेबाजों पर भारी पड़ सके। तो देखते हैं क्या होता है। 29 रन 24 गेंदों पर 29 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवरीज, और हम उम्मीद करते हैं हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं सतीश कि यह सत्र काफी रोचक होगा और इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए दोनों टीमों के बीच में जो टक्कर जारी है, इस टक्कर में एक क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। Well, exactly, Gopi. And before coming back to your point, I would like to invite all NM cricketers, Mangalore players, to sign the official chart as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ NM cricketers ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So before we coming back to the point, which is the question which is asked by Gopi, I would like to announce some names which is really we need to remember all these dignitaries who really supported for the success of this cricket tournament, and we are thankful and grateful for your support. I would like to announce some names: Ashraf Corporator Bajal, Jalil Shanthinagara, Azhar Faisal Nagar, Shabir Shabu Kankanadi, Mohammad HHM Shanthinagara. So we are really grateful and thankful all the donors who are supported for the success of this wonderful cricket tournament in the name of Nethravathi Trophy 2022. And right, Gopi, the difference between the over difference Gopi, but difference is big as far as the run rate required is concerned. From 7.25 runs per over, 7.25 runs per over, the 5.80 runs. Look at the difference. If we are just simply saying that 1 over, but 1 over is make a lot of difference as far as the required run rate is concerned. But
they need to deal with this as Red Wings if they wanted to be in the final of this prestigious cricket tournament. And wait to see how well Red Wings Kunjat Bail will going to get this score, and wait and see how Jolly Friends Bajal will going to defend this total. The competition is looks to be very very interesting. This match definitely going to be a more interesting for the spectators, those who are gathered in a huge number in this most beautiful venue, and of course more interesting for the viewers, those who are watching in a live telecast of YouTube channel of Bedra Media. Even though the cricket lovers knowing that the only two matches they're going to witness today, but look at the number of crowds here, absolutely fantastic. Even though it's a working day, but really very good crowds out here. Just wanted to see the competition in this prestigious Nethravathi trophy. Meanwhile, Red Wings, they off the mark with a single, as Ashok is a very senior and very fantastic cricketer as far as Red Wings is concerned. He's off the mark with a single. They off the mark and one without loss of an wicket. Ashok is a very key player for the side of Red Wings if they wanted to win the match, because he's the one very intelligent and experienced campaign, and experience always going to work. Again, Isam bowls and batsman going for the drive, but Tanzim couldn't manage to get the timing behind the stroke, and they completed a single for that. With the single, scoreboard numbers on to 2 on the board, 2 without loss of any wicket. A lovely delivery. This is a much required dotted delivery there from Isam. Each and every dot ball will going to create the problem here for Red Wings, and straight away there was anticipation, of course, from the closing fielder, just appreciating the effort of Isam, that each and every dot ball going to be a very important. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೆರಿಲ್ ರೇಗೋ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಸಿಫ್ ಬಜಾಲ್, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So lovely improvisation there from Ashok, just learning from the mistake what he did in the previous delivery as he picked up a single down to third man region. So this is a power play, and in the power play over, Red Wings knows that at least 8 or 9 runs which is required for them if they wanted to get this winning runs for his team, for the team. And Isam once again back to his bowling mark. It's a very experienced bowler, Isham, and one who represent KFC Krishnapura, one of his home team. And most of the time he is representing in that Surathkal and Krishnapur region when the tournament is for some tournaments he is representing for his home team KFC Krishnapura. Again, a beautifully bowled. This is the second dotted delivery of that over. Isam beautifully bowling here. This just giving his 100% what the experience he has got in his career. He's putting everything in this particular match. And he's bowled one more dotted delivery. 2 dotted deliveries in the over, and straight away pressure is mounting up here for Red Wings. Now Ashok coming down the track and just having some word with his partner Tanzim. Both the batters played one dotted delivery in this particular over, and wait and see. But one big shot will going to change the complexion of the match. That is the beauty of small games, small format games. This is a chance of run out in the non-strikers, and throw is not quick enough. Actually, that throw is not good enough to get that run out. As it's a ground pretty hard. Instead of hitting the wicket, it's the ground pretty hard, so that the batsman just survived from that run out. But anyhow, it's a very good over which is bowled there by Isam after completion of over number first, chasing 29 to qualify for the final, and Red Wings only managed to get only 4 runs on the board. And Gopi Isam's over, first over. What a fantastic over. What a fantastic over. It's an outstanding over, isn't it? 4 runs in that over, and put a little bit of pressure now for the Red Wings, because the run rate required is now climbing up. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, एक बेहतर शुरुआत जो गेंदबाजी में जो उम्मीद थी बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत की, तो शुरुआत इस वक्त गेंदबाज दे चुके हैं और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन प्रदान कर चुका है इशाम। अब जहां तक इक्वेशन का सवाल है, 25 रन बनाने हैं, 18 गेंदें बाकी, एंड द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप एग्जैक्टली 8.33 रन फॉर 25 रिक्वायर्ड, 25 नीडेड इन 18 बॉल्स। अब मैं समझता हूं कुछ हद तक अपने बल्लेबाजी में तेजी लानी होगी यहां पर बल्लेबाजों को, रेड विंग्स कुंजत बैल के, अगर उन्हें इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो। Exactly, Gopi. Acceleration of run rate, which is more important. They need to put the leg from
brake pedal to accelerator pedal, and wait and see how well they will going to accelerate the run rate in remaining 3 overs. As a bowler, Sahil, right over the wicket, one more delivery, one more dotted delivery, nowhere near the pitch of the delivery. It's a blind attempt there from Tanzim. The line of the delivery is outside the line of off stump, and batsman wanted to hit the ball towards onside region. It's a good thinking from the bowler's point of view, as the ball outside the line of off stump and batsman completely missed out. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಫ್ ಬಜಾಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ is here for this wonderful tournament, and welcome on behalf of cricket lovers and organizers. Again, lovely shot there from Tanzim, swept that one firmly down to deep backward square leg for a single. With that single scorer now moves on to 5 on the board, but these singles, they're definitely, of course they're required. The singles is always required, but along with that singles, some big stroke which is badly required here for Red Wings if they wanted to catch the run rate required. But so far I think the Jolly Friends are in a commanding position. This time again the little bit short pitch delivery, diving effort that one fielder, that diving effort fielding is going to give a chance here for the batter to come back for the second. What we are talking about, if the fielder is not really able to attempt that one, the ball is suddenly going to the hands of deep wicket, then only the possibility of a single run. Because of that, fielder is having a little bit fingertip sound on that, the batsman has got opportunity to come back for the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 7 on the board, 7 without loss of any wicket. What a fantastic game is progressing here. Both the teams are battling hard for the victory, for the places in the finals of the prestigious Nethravathi Trophy 2022. Again, Sahil bowling away from us. Right arm over the wicket, Ashok going for the drive, but again the dotted delivery. This time is just changing the pace very well. Clever thinking there by Sahil. Bowled a slower one. Ashok tried to hit the ball on the onside region and offside region, but he just couldn't manage to able to get the timing behind the stroke. Important dotted delivery there from Sahil. Again bowling with a short run up. Right arm over the wicket to Ashok. Ashok this time left the ball. Oh my goodness, the wicket keeper behind the stump. This time it looks like it's a deliberate padding. This is deliberate padding there from Ashok. I think Ashok thinking about the ball might be going towards outside the line of leg stump. It's going to be wide. He tried to leave the ball, but ball is just hitting his legs, and one more dotted delivery. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದಯಮಾಡಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Abdul Qadir announced 1,000 rupees for the hat-trick wicket and of Jolly Friends. Again, next one, Sahil. Right arm over the wicket, balls to Ashok. Ashok searching for the big shot. This time, again he missed it. Again the wicket keeper fumbled, but they're not taking advantage of that one. What really going on here? Ashok is really feeling the pressure a lot. 3 consecutive dotted deliveries in this over. What a fantastic over progressing here for Sahil. After 2 overs completed, chasing 29 to win this match, Red Wings struggling in the middle. They are 7 on the board, and all in sudden, Gopi, now 22 more runs required for the victory in remaining 2 overs, and asking run is suddenly climbing up to 11 runs per over. In the beginning, it's a 7.25 runs per over, and because of that 2 fantastic overs which is bowled there by Jolly Friends, now asking run is straight away jumping into 11 runs per hour. What do you think will going to be a possibility here for Red Wings? पॉसिबल है जरूर, लेकिन चौके और छक्के यहाँ पर लगाने होंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि पानी लगभग सिर से ऊपर इस वक्त निकलता हुआ। 22 रन बनाने 12 गेंदों में 11 रन प्रति ओवर के औसत से, और मैं समझता हूँ कुछ हद तक कठिन जरूर है लक्ष्य, लेकिन मुमकिन जरूर है। और रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों को क्षमता है कि वो चौके और छक्के लगा सकते हैं, और इस वक्त अपनी प्रतिभा का उन बल्लेबाजों को यहाँ पर अनावरण करना है। तो इस वक्त तख्ता भारी लगता हुआ जॉली फ्रेंड्स का, लेकिन मैं कहूंगा सतीश बाउंस बैक करने का मौका जरूर है रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों को इन बचे हुए अंतिम 2 ओवर में।
Exactly, Gopi. You are talking about the ability, the potential what Red Wings batsman has got. No doubt at all. Of course, they got some potential of hitting a big shot, but handling the pressure is so important in this situation, Gopi. Even the bowler have to handle the pressure because batsman in aggressive frame of mind. But here is the first wicket. Is back into pavilion. The Farooq, the captain of the side, is having a very important breakthrough. Just looking for the improvising slog shot towards the deep backward square leg, exposing his leg stump, and Farooq bowling around his legs and hitting the middle stump. The wicket number first, which is back into pavilion of Jolly Friends. And now look at the crowd, the supporters of Jolly Friends. They are on their feet. They know exactly. They got a big wicket here. The wicket of Tanzim is back into pavilion. Now, Red Wings, do or die situation here. Do or die situation here, and new batsman, the back is coming to the middle in place of Ashok. It's none other than in the place of Tanzim. It's Ashraf is came into middle. Ashraf, of course, he knows that is a do or die situation. 11 ball, 22 runs required for the victory, and definitely do or die situation. But here is a batsman wanted to do before die. Wait and see as Farooq. He's got a success in the first ball itself. I request the fielding team make it past again. Right arm over the wicket. Pass the umpire to Ashraf. Ashraf going for the mighty stroke. Not quite getting that one from middle of the bat, but he managed to get the single down to deep long on. With that single scoreboard, Namozan to 8 on the board, 8 in the sense 21 required from 10 balls. The difference between run and ball exactly the 11. If you wanted to reduce that difference, needed badly one big shot. Not much time left here for team Red Wings to think and play, but they desperately required one big shot if you wanted to back on this game. One big shot will going to change the complexion of this match, but Ashraf doesn't want to do that, so he's so far looking pretty good in this over. Bowling right arm over the wicket. Bowls. This is an unforced errors. This is unforced errors because things are so good is going for Farooq. He bowled wide deliveries. That means he's just opening the gate for the opposition. One delivery extra he need to bowl. At the same time, he already conceded one extra runs. 9 on the board. 9 means 20 required. 10 balls remaining. 2 per ball, which is going to be run rate. Per ball required run rate. It's not per over. It's a per ball. It's a 2 runs required. Ashok going for the off drive again. A lot of dotted deliveries Ashok is playing. Look at that one. Absolutely, that ball came into him with such a pace as he completely missed out that wicketkeeper behind the stump in a fraction, complete the job, but he will not going to get the result for that. But one dotted is quite enough for Farooq to put some pressure straight away onto Ashok. I want to see Ashok is playing a different innings here. He's batting on 4, but already he played on 8 deliveries. That means that 5 dotted deliveries will going to make a big difference here. But still, Ashok is got opportunity. He can be the hero if he able to get 1 or 2 big shot in this particular over. Gopi, opportunity is still remaining here for Red Wings to back in this game. But so far, looks like Jolly Friends, they are in a driver's seat. Again, right arm over the wicket, lofted, ball is in there. Chance here for the fielder, but fielder is too far, so that batsman got a couple of runs here. So with that couple of runs, scored Namozan to 11 on the board, 11 in the sense, and Farooq is not really happy with the effort of the fielder, but even the fielders also knows that if you're trying for the catch, the possibility of the ball is missing their hands, ball definitely going to be the boundary. More than they're thinking of the wicket, they're thinking about the saving the runs by the outfielders. So 11 more runs, 11 on the board, that means 18 more runs required for the victory. 8 deliveries remaining. What a match. 8-18 for Red Wings to win this match. Ashok facing Farooq. Appeal for leg before wicket. Going down the leg stump. What umpire Hanif is saying. Absolutely, that ball is getting extra turn. Going down the leg stump. One more wide. One more single in the form of leg by. With that, one more single. Scoreboard numbers on to 12. 17 to get. And 7 to go. So far, the 4 overs we are talking about, 3 overs we are talking about, outstanding bowling performance there from Jolly Friends. Starts with Isam, he's bowled a very good over of 4 runs, that is a power play over he bowled. Then Sahil came in and he bowled one more fantastic over of just 3 runs. And now captain of the side, Farooq, so far been looking pretty good. And again, this time the batsman
Ashraf is a very good striker of the ball, facing Farooq. This time, again, the unforced error. We are talking about the second wide of this over. Slowly, the bowler started to feel the pressure. He wanted to defeat the bat of the batsman. That's why he trying to bowl outside the line of off time, but he couldn't manage to control that line. What he's looking for, 13 on the board, and that means 15 more, 16 more runs required for the victory again. Right about the wicket, going for the drive. Again, not really getting that much of elevation. He's looking for as Ashraf. A fumble from the fielder. Going for the second. Chance of run out. But umpire says not out. But his absence of mind. But presence of mind here from Ashok. Completes a couple of runs here. Takes the match into very interesting for that last over. The scoreboard is exactly 15 on the board. And Gopi climax of this semi-final. Now straight away into the last over, and the bowler has to handle the pressure of restricting the 14 runs in the final over, and pressure is building up for the batsman to need to get the 14 runs in that last over, and definitely the both definitely going to be pressure. The batsman definitely going to be under pressure. Bowler absolutely is in a tremendous pressure, and more than anything else, the fielder is also under pressure, and even spectators also a little bit under pressure to see that which team will going to qualify for the final. बिल्कुल सतीश, इस वक्त हर कोई दबाव यहाँ पर फील करता हुआ एनएम ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो बिल्कुल everyone feeling the pressure now, the batsman, bowler, fielder and also spectators, they are also feeling this pressure at this situation, and absolutely fantastic match is now progressing here. 14 required of last over, और मैं समझता हूँ यहाँ पर पिछला ओवर कुछ हद तक बेहतर था पहले 3 ओवर के मुकाबले, जिसमें 8 रन बने, और यहाँ पर अंतिम ओवर में अब बनाने हैं 14 रन. तो इस वक्त चाहिए चौके और छक्के रेड विंग्स को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए. तो यहाँ पर फील्डिंग में जमावट चलती हुई और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए एरिस, जबकि सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज अशोक नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद इस वक्त अशरफ. तो इस वक्त अशोक एरिस की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिना ओवर द विकेट. 14 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर. 13 फॉर टाई, 14 फॉर विन, एंड द लास्ट ओवर ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाह चुके. डॉट गेंद, 5 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए. अब ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स कुंजत बैल को चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. तो इस वक्त शाबाशी देते हुए गेंदबाज को इस बेहतर गेंद के लिए अन्य खिलाड़ी, और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, वाइड का इशारा. 1+1, 12 रिक्वायर्ड, 5 balls to go, 11 for tie, 12 for win, and still the match is now not yet over. तो उम्मीदें अभी भी बरकरार, और यहाँ पर देखते हैं अब जो स्ट्राइक पर आ चुके हैं अशरफ, जो कि इस वक्त एरिस की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ पड़ता हुआ, और जहाँ तक है सवाल फील्डिंग का, तो फील्डिंग इस वक्त मैदान पर छाती हुई, और इस वक्त एरिस गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. 5 गेंदें बाकी हैं, रन से चाहिए 12. दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए, और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. तो अगली गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, और गेंदबाज एरिस दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाह चुके, विकेट कीपर चूके. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. अब कुल मिलाकर 18 रनों पर 11 रन और चाहिए विजय के लिए. 4 गेंदें बाकी, 10 for tie, 11 for win, just 4 balls remaining in their innings. They badly required बाउंड्री और 6 at this stage to get back into this match. और तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ जॉली फ्रेंड्स का, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इन बचे हुए 4 गेंदों में रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों को.
दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार ये गेंद लेकर तैयार, इसे उछालना चाहा, मिडल स्टंप को उखड़ कर गिरता हुआ, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है अशोक का। तो 18 रन और एक और विकेट गिर चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के इस मैच में रेड विंग्स को विजय दिला सकते हैं। 11 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी, 11 रन टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, और अशोक की स्ट्रगलिंग इनिंग्स, स्ट्रगलिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है, संघर्षपूर्ण पारी पर पर्दा गिर चुका है। 12 गेंदों पर सिर्फ 6 रन उन्होंने बनाए। ही स्कोर्ड 6 runs of 12 deliveries, and after being playing struggled innings he is backing to pavilion. तो इस वक्त 3 गेंदें, 11 रन चाहिए, और गेंदबाज एरिस जो कि एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज जिनका आगमन हो चुका है, रंजीत इस वक्त सामना करते हुए, फील्डर्स मैदान पर छाते हुए इस वक्त, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज एरिस इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रंजीत के लिए। 3 गेंदें इस वक्त, बेहतर फेंकनी है गेंदबाज को, और यहां पर स्ट्रोक से खेलने हैं चौके और छक्के के रूप में रेड विंग्स कुंजत बेल को इस मैच में अपनी वापसी कमबैक करने के लिए। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, टॉप एज शॉट, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। तो 2 गेंदे, 11 रन, द लास्ट चांस नाउ इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ रेड विंग्स कुंजत बेल, और 2 गेंदों में 2 विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज एरिस। हैट्रिक का सुनहरा मौका उनके लिए, अगर वो हैट्रिक प्राप्त करते हैं तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार अब्दुल खदर इनकी ओर से घोषित किया गया है कुछ देर पहले, और वो मौका, उस 1000 रुपए को प्राप्त करने का मौका अब गेंदबाज एरिस के सामने। 11 रिक्वायर्ड, 2 balls remaining, 2 sixes badly required, 1 6 and a boundary can tie the match। और यहां पर गेंदबाज एरिस इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अगर इस गेंद पर कोई छक्का या चौका लगता है तो मैच के अंतिम गेंद में कशिश बरकरार रहेगी। और एरिस 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, हालांकि एक वाइड उन्होंने जरूर फेंका है, 2 रन अतिरिक्त के रूप में उन्होंने जरूर प्रदान किया है, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए, बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला। 2 गेंदें, 11 रन, लास्ट चांस, हियर वी गो। और इस वक्त एरिस तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद फुल टॉस, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ नहीं मिलेगा, दूसरा रन, और यहां पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा तो ऑन साइड पर, टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई, तो 1 रन यहां पर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 10 required of last delivery। तो इस वक्त बातचीत जारी है, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी है, और 10 रन चाहिए, देखते हैं इस बार अंतिम गेंद में क्या होता है। So just now umpire signal to the third umpire, और इस बार देखते हैं यहां पर ये गेंद कमर के ऊंचाई के ऊपर से गई थी या नहीं। अंपायर ने इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त कॉल दिया है।
यहाँ पर जहां तक सवाल है, इस वक्त तृतीय अंपायर देख रहे हैं. So it's a no ball. Above the waist high, और यहाँ पर नो बॉल घोषित किया गया क्योंकि गेंद काफी ऊंची थी और बल्लेबाज ने गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ दिया था. तो एक रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. Now 2 balls and 9 runs required. 9 runs required in 2 balls. 8 for tie, 9 for win. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಿಗೆ ಸರಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 2 balls and 9 runs. Here we go. फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा चुके और यहां पर डॉट गेंद हो चुकी है और इस बीच रन से नहीं मिलेंगे. अब अंतिम गेंद बाकी और 9 रन चाहिए रेड विंग्स कुंजत बैल को. 9 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल. 8 for tie, 9 for win. So he's gone and one more wicket faller. Last ball remaining and 9 runs required. So the last ball of the match is now coming up. 9 required of last delivery. Here it comes. So 9 runs required in the last delivery, and the last delivery of the match is now coming up. Driven, that's it. 8 runs victory for Jolly Friends against Red Wings Kunjat Bail, and with that victory they are through to the grand finale of this competition. And now grand finale of this tournament, mega final will be played between NM Manglore versus Jolly Friends Bajal, and that match starts within just a short while. And we'll be back right after the short break with Satish in English. Thank you very much.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಪಿಚ್ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು and Jolly Friends Bajal to please go in middle of the pitch for the toss ceremony. So the final match is now going to begin, and let's see who will be won the toss, and after that who will be won the match. So the match, the grand finale of Nethravathi Trophy 2022 is now coming up, which proudly presented by friends Shanthinagara, and we are just waiting for the toss ceremony of this grand finale match. So we'll be back right after the short break with my friend Mr. Satish in English when the grand finale, mega final match of this tournament will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So toss ceremony is now going in the middle of the pitch, and let's see who will be won the toss. NM, the captain of NM and Jolly Friends, making a toss procedure, and Jolly Friends after won the toss and what the decision he has taken, just we have to wait and see. So 6 overs per side to be played, and I request the
the captain of Jolly Friends, please tell your decision. Seven overs, final match. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So they elected to bat first after we won the toss. और सतीश आइए आपको माइक्रोफोन पर बुलाते हैं. तो यहाँ पर जॉली फ्रेंड्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन दी सेमीफाइनल मैच रेड विंग्स के खिलाफ उन्होंने अनिरीक्षित फलितांश यहाँ पर दर्ज किया है. बेहतरीन क्रिकेट दिखाते हैं, बेहतरीन खेल दिखाते हुए. और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर फाइनलिस्ट में ओपोनेंट है एनएम मैंगलोर, वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ मैंगलोर. और मैं समझता हूँ जहाँ तक यहाँ पर रेड विंग्स के खिलाफ उन्होंने जिस रणनीति के साथ खेल खेली थी उसी रणनीति यहाँ पर उन्हें अपनानी है एनएम मैंगलोर के सामने. लेकिन टैक्टिक्स का जहां तक सवाल है, रणनीति का, तो रणनीति में कुछ हद तक बदलाव लाना होगा. क्योंकि यहाँ पर एनएम मैंगलोर के खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की ओर एक बार अगर आप नजर फिराए तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस तरीके की रणनीति आपको यहाँ पर रचानी है. तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का प्रदर्शन वो यहाँ पर देते हैं एनएम के खिलाफ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಪಿಚ್ ಬಳಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಿಚ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. So fantastic cricket tournament and a fantastic final match is now going to begin, Satish, and reputed our honorable guests are just walking towards to the pit to having a shake hand, having an introduction and shake hand with the player, and this is an absolutely fantastic picture in front of us. What do you think, Satish?
Exactly, Gopi, and just needed to be because to two teams which is deserve the place in the big final, and they played a very good game of cricket. And already this final will going to witness with some very dignitaries out here in the for the presentation ceremony. We have Meryl Rego, General Secretary of Youth Congress. We have Sunil Pujari, the President of Youth Congress. Asif Bajal, Chief Secretary of Youth Congress, and we have. Vishwas Das, President of Backward Community Congress, and we welcome all of them for this wonderful cricket tournament in the name of Nethravathi Trophy 2022. Along with this dignitaries, we have one of the successful organizer, and that is none other than the Mansoor is leading from the front and taken this tournament for a very successful one. It's not so easy, Gopi, to organize a cricket tournament for the long time. It's 3+1. It's a 4-day cricket tournament which is organized in this particular tournament, and I think they've done a great job here to organize such a wonderful cricket tournament in the name of Nethravathi Trophy 2022. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ NM Cricketers Manglore. The two teams, and they came into the final. One which is came from the main pool, that is a Mangalore pool, that is NM Cricketers Mangalore. Out of 6 teams of seeded teams, they came into final, and at last Jolly Friends they came into the finals of this prestigious cricket tournament. I want to know the number of overs for the final. It's a 6 overs, I think so. 6 overs. What organizer is told here. 6 overs game. Already organizer told that because of shortage of time, they decided to play 6 overs. Please cooperate. Thank you. 6 overs game. So please continue with that. The last match is the man of the match, which goes to Harris of Jolly Friends, and I request Harris to come and collect your man of the match award from our chief guest. Bajantri sir, Circle Inspector Baider. Meryl Rego to present this. Bajantri sir, Circle Inspector Baider, welcome. Bajantri sir. So now we have Circle Inspector here, the Bajantri sir. Sir, welcome for this wonderful final of this prestigious cricket tournament on behalf of cricket lovers, on behalf of organizers, friends Shanthinagara for this Nethravathi Trophy 2022. And here is the first over. The power play will going to start from the commentary box, and the bowler will going to start proceeding. So Mujib is a very good bowler. It starts with the first ball, and bowler's back drive. They're going for the run, but going against that one because Mujib fields the ball on his follow through, and it's a very good stop there for Mujib. It's not so easy to whenever the batsman hitting the ball straight down the ground as straight as an arrow, and Mujib is just stopped that one beautifully and stopping some runs for his team as well. Mujib again back to his bowling mark. Short run up, right arm over the wicket. Bounce drives that one powerfully. Lack of placement, straight to the hands of Atif at extra cover. The captain of the side stops the ball. Two powerful hittings, but lack of placement is unfortunately Tajuddin, the hero of the yesterday's match, is couldn't manage to open the account, and still it's a 0-0 in the over number first in progress. There is a backward point, short cover point, short extra cover. The three fielders very close together, and one at short fine, I got square leg in front of a square, one at deep mid wicket and a short mid on. Here is the next one, lofted that one right over the infield, down to deep extra cover region before the fielder from deep wideish long off to cut it off. Ample time for Tajuddin to complete that couple of runs. The perfect limited over stroke, and especially the stroke which is definitely going to be very effective when playing in the power play overs, when all the fielders inside the ring in the offside region. One is the deep long off is there, and Tajuddin is off the mark with that couple of runs. Confident looking lofted drive, but not really able to get that the boundary what he's looking for because he didn't got enough timing in that stroke, but anyhow he got a couple of runs for that. Again Mujib bowling away from us. Right arm over the kitty balls again. That ball little bit down the leg stump. Wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. That's why umpires signaled it's a leg bite. It's very difficult for the wicket keeper to collect that one when ball is deflected from the leg of the batters. Tajuddin off the strike, and Azim is definitely going to be the batter now. Will going to face his first delivery, and both the batters have laid the foundation in the previous match in the semi-final, and certainly they wanted to continue that start in this big final as well. Right arm over the wicket, drives that one again wide off that extra cover fielder before the fielder from deep wideish long off to cut it off
ample time for the batsman Azim to get picked up a single. With that single scored Namozan to 4 on the board without loss of any wicket. What an outstanding tournament here. Absolutely, it's 4 days of cricket tournament, which is really witnessing some unbelievable performance from all the teams. But at last, 2 teams which is qualified for the final of this prestigious Nethravathi Trophy 2022. This is a 100 chip down to deep mid wicket reach, and there is a fielder there in the deep. He will going to cut it up, but he can't able to cut a couple of runs here for Tajuddin. Tajuddin, I'm really surprised. Sometimes he's hitting the ball. When he is trying to hit the ball hard, he's just losing a grip in the bottom end. And in the previous yesterday's match also, when he hit that 6, the same thing has happened. And I don't know where he was getting that much of power behind the stroke when he was losing his grip over the top end. It's definitely going to the strong wrist work what he has got when he was holding the ball in the top end and bottom end. Even he was a bottom end which just couldn't manage to hold that one properly. But because of his holding the top end very strongly, he getting a lot of power behind the stroke. Again, one more single is able to get, and with that single score, but Namozan to 6 on the board after completion of first over. And Gopi, it's a decent start, isn't it? Without losing a wicket, getting a 6 runs. Without losing a wicket, getting a 6 runs against the bowling of Mujebi is always started very well throughout the tournament. I think the batsmen really playing as per the plan, the game plan. They know exactly Mujebi is a wicket-taking bowler. They save the wicket. They got a 6 valuable runs for their team. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा तो अपने गेम प्लान के अनुसार वो उतर चुके हैं और अपने गेम प्लान के अनुसार वो यहाँ पर खेलते हैं। और जिस तरीके से मुजीब के खिलाफ उन्होंने पहले ओवर में बल्लेबाजी की है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने गेम प्लान करके यहाँ पर मैदान पर उनके सलामी बल्लेबाज उतरे हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी खासकर पावर प्ले ओवर्स में और पावर प्ले के बाद उन्हें अपनानी है। तो पहले ओवर में 6 रन और मुजीब के खिलाफ पहले ओवर में 6 रन बनाना एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी। लेकिन आने वाले ओवर्स में उन्हें रनों की गति को रन ज्यादा उन्हें बनाने होंगे अगले ओवर्स में, अगले चंद ओवर्स में रनों की संख्या को एक्सेलरेट यहाँ पर करना पड़ेगा। और कम से कम मैं समझता हूँ सतीश 40 का आंकड़ा उन्हें यहाँ पर पार करना पड़ेगा। दे शुड हैव टू क्रॉस द मार्क ऑफ 40 if they have to post a good total in front of the strong batting lineup of NM Mangalore. Exactly, Gopi. They need to accelerate the run rate and wait and see they provide the opportunity for the acceleration. Here is the acceleration which comes into play, but not more than a single in the negation because that was a declared area behind the wicket, not having that much of scoring opportunity. Just a single here for the batter Azim, then scored Namozan to 7 on the board without loss of any wicket. Riaz, one more fantastic all-rounder as far as Underarm cricket is concerned. He's just looks like he's almost the accomplished player now for NM cricketers Mangalore. He can bat, he can bowl, and he's a very good fielder as well. Gaining Riaz right arm over the wicket. Bounce. This time looks like the ball is very close to the stumps. Maybe that ball just missing the stumps here, but umpire the Mansoor says nothing has happened. Maybe the ball just kisses that stumps, but bails are not off. Absolutely, it's a lucky. Absolutely lucky here for Azim because you can't get that kind of scenario regularly, but sometimes if you have a lot of luck then that definitely you will going to enjoy that luck because ball just kiss the stumps, but bails are not off. And again Riaz bowling away from us with a short run up. All right, now over the wicket bounced again. Azim wanted to sweep that one. He says no, but his partner says yes. But Tajuddin is a big wicket, absolutely big wicket. Is now back into pavilion of Jolly friends. I think NM Cricketers Mangalore has got a big fish in the net, Gopi. Absolutely big fish in the net. He's a danger man as far as NM Cricketers Mangalore is concerned. They just desperately wanted to send this danger man back as quick as possible, but it's unfortunate because a total misunderstanding between the wicket. And Azim wanted to sweep that one. He misses the ball, but at the time Tajuddin knows that there's a possibility of a run there, but his partner unfortunately not responding for that run. It's definitely going to be a big wicket, isn't it? बिल्कुल सतीश, जो कि बड़ी मछली इस वक्त जाल में गिर चुकी है और ताजुद्दीन जो कि इस श्रृंखला में एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था पिछले मैचेस में। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिग फिश इन द नेट, बड़ी मछली इस वक्त जाल में गिर चुकी है। और अब रहा सवाल इस वक्त एनएम के गेंदबाजों का, तो कुछ और बल्लेबाजों को इस वक्त उन्हें पेविलियन भेजना है। और जहां तक सवाल है इस वक्त जॉली फ्रेंड्स का, तो ताजुद्दीन का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव क्रिएट हो चुका है, एक साजदा के जरिए उस दबाव को यहां पर कम करना होगा उनके बल्लेबाजों को। Exactly, Gopi. The new batsman of course came into middle in the non-striker's end, but here is a striker picking up the single by playing the reverse sweep, and with that single score, Namozan to
Eight on, little correction, yes, exactly the eight on the board for the loss of one wicket. The wicket of Tazuddin is back into pavilion, unfortunately, in the form of run out. Riaz again back to his bowling mark. New batsman Sahil, one more very talented player for the side of Jolly Friends. Wait and see how he will go into anchor the innings after losing Tazuddin's wicket. Again, looking for the reverse sweep. Both wicket keeper and the short third man fielder fails to collect the ball, but fortunately, there was a protection behind the wicket so that there is no possibility of any run at all for the batters. One more dotted delivery in the dedication there from Riaz. So far, it's a good over there from Riaz. He's not giving any opportunity for the batters to freeze the arm, and he's bowling some with the extra pace and quickness so that the batsmen are struggling. The slow one. Oh, what a catch! Magnificent catch there from, I think, Fairoz is a very senior most. Faisal is a senior most fielder in the side of player in the side of NM Cricketers Mangalore. Take a wonderful catch, isn't it? Absolutely wonderful catch, because that ball went like a tracer bullet. That ball went like a tracer bullet, and he's reacted like I think in a fraction of a second. Gopi, that ball went to him, and the reaction time, it's definitely going to be a fraction of a second. And the experience, the fielder Faisal, I think, great catch, Gopi. It's a very good catch indeed. Maybe it looks like very simple, because the fact that ball is came to him is very quickly and need to react very quickly, and wonderful catch and catch which is taken. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इस वक्त गेंद पहुंची। देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त ऑन साइड की दिशा में, और गेंद पहुंची फ्लैटर वर्जन पर, एंड दिस इज एन मैग्निफिसेंट, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंटली टेकन जस्ट इनसाइड द 20 सर्कल इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हालांकि यहाँ पर मैं समझता हूँ खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं था, लेकिन अपने शरीर के संतुलन को कायम रखते हुए इस कैच को बेहतरीन तरीके से फ्लैटर वर्जन पर जो गेंद आई थी इस गेंद को लपक लिया, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। अब कुछ हद तक दबाव जॉली फ्रेंड्स के ऊपर, और जहां तक सवाल है ओवर्स का, तो 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर में मैं कहूंगा सतीश एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों ने अपने क्षमता एबिलिटी के अनुसार गेंदबाजी की है। Absolutely, Gopi. They bowled as for the reputation what they got as one of the top team in Mangalore South Kent district. And again, first ball of the over number 3rd, which is nicely swept that one down to square leg region for a single by Azim. With that single score, Namuzan to 9 on the board for the loss of 2 wicket. What an outstanding mega final is progressing here. Both the teams wanted to become the champion of this prestigious Nethravathi Trophy 2022. They doesn't want to lose the opportunity to become the champion here, because they're not only going to get the champions trophy, but at the same time they will going to get a big prize money of rupees, exactly 1,111 rupees, and the runners will going to get 50,000. That means that both the teams definitely going to battle hard, because they wanted to be the champion of this prestigious cricket tournament. Wait and see. So far it's a equal battle is on between these two very good teams, as again the captain of the side Atif bowling right arm over the wicket to the new batsman. Again off the toes, flicks it on off his legs down to deep backward square leg region for a walkable single. With that single score, Namuzan to 10 on the board. At the same time, Gopi, just talking about the catch which is taken by Faisal down at short square region. The ball which is I want to see that Riaz is bowled a slow leg cutter which is came along the carpet when I watched it in a replay, and again he went for the reverse sweep and he got a single for that declared area, so that with that single covered Namuzan to 11 on the board. That ball is turning. It's just trying for the slower one, leg cutter. That ball is almost comes like around the legs, and batsman try to hit the ball. He hits the ball, but unfortunately the square leg fielder takes a very good catch. Extra fielder is entering into the ground, and 12th man maybe is more than I think, Gopi. Every time whenever the excitement is in the ground, the cow which is definitely going to be afraid of this cricket ground always entering into the ground, and again one more single is added totally with that singles cover Namuzan to 12 on the board, 12 for the loss of 2 wicket in the over number third in progress. First warning which is given to the bowler Atif as he was coming right in front of umpire Iqbal. This is a protected zone for the bowler, and Atif should be very careful. Again, right arm over the wicket, he balls over pitch delivery outside the line of off frame. Batsman quite nicely driven down to deep long off region for a single there by Safwan. Safwan is a very good striker of the ball. He played a very good innings in the last 2-3 matches for Jolly Friends, and this man is a very key player. Azim is a very cool and calm customer who rotates the strike very well, and again look at that one, absolutely, that what you're talking about is rotate the strike very well. It's so important in cricket, isn't it? You cannot neglect the singles in the limited over matches. Of course, if even the 6 overs format of the game, but the singles always very important to get some good score here. So 3 overs complete after completion of 3
overs searching for the right track. Jolly Friends looks like it's one of the better over. After that quiet over in the previous over, in that over they got 6 runs, and altogether the scoreboard is 14 on the board. 3 overs completed, Gopi, and I think the kind of the run which is required in the first 3 overs, and considering the fact that out of 3 1 over is going to be a power play, and 40 runs, I think 2 over power play, and I think it's not a start which is Jolly Friends which is really looking for, but still they got a time here for the acceleration of run rate, because Azim is a subtle batsman in the middle, and Safwan is a very good striker of the ball, and definitely they eyeing towards a 40 plus run in 6 overs. Then if you're able to get that one, it's going to be a very good total to depend in the bigger final. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, 40 प्लस रन यहाँ पर बनाने होंगे अगर चुनौती भरा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा करना है तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए यहाँ पर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से रियाज दाहिना तो ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले कि थ्रो पहुंचे गेंदबाज के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 15 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर। सफवान और दूसरे बल्लेबाज है इस वक्त क्रीज पर मौजूद, अजीम जो कि पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए, और इस बीच रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिनात के बल्लेबाज सफवान इस वक्त सामना करते हुए, गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन, और विकेट कीपर मंसूर ने गेंद के साथ विकेट इस वक्त उठा ली, क्योंकि शायद वहां पर गिल्ली गिर चुका था और इस बार तीसरे अंपायर के लिए यहां पर कॉल किया गया है। सो जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर, और देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर क्या डिसीजन यहां पर निर्धार देते हैं। तो बेहतरीन एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम, निस्संदेह नंतूर पदों का ये मैदान पर इस वक्त काफी मात्रा में दर्शक मौजूद मैदान पर भर चुके हैं, और भरनी भी चाहिए क्योंकि एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला नेत्रावती ट्रॉफी 2022-2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स शांतिनगर ने, और इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच यहां पर प्रगति पर, और दो बेहतर टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला यहां पर जारी है। तो इस वक्त देखते हैं तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। नॉट आउट इस वक्त निर्धार आ चुका है, बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे जब विकेट कीपर ने गेंद के साथ स्टंप्स को उठाया था, और आखिरकार यहां पर बल्लेबाज सुरक्षित, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए सफवान सामना करने के लिए तैयार। 4 से 5 का दब्बा रियाज का रन अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त सफवान, जो कि इस वक्त बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को, दैट इज एन मैग्निफिसेंट, दैट इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी। गेंद टिप्पा खाई, लेकिन टिप्पा खाने के बाद नीचे रहे और एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहता, बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ गए, और देखिए यहां पर किस तरह से हुआ था, और गेंद उनके बल्ले और पैर को वंचित करते हुए सीधे जा टकराए मिडल लेग स्टंप पर, एंड मिडल लेग स्टंप हैज बीन uprooted and Bills has been disturbed. So that is a magnificent delivery, and because of that magnificent delivery, he's got the reward. He's got the rid of the batsman, and third wicket loss for Jolly Friends. And with this dismissal, they are looking in trouble. It's 15 for the loss of 3 wickets. So, some funny things is going on here in this ground, also in our commentator box. What do you think, Satish? There's an absolutely funny things is going on here in this grand finale match. And let's forget all the funny things, and let's straight away coming back to the match. And now the bowler Riaz bowling to a new man, नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, और रियाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद की गति को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त जाने दिया, विकेट कीपर के आते हुए परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, और आखिरकार गेंद को अपने दूसरे पैर में यहाँ पर फील्ड कर लिया गया विकेट कीपर द्वारा, और इस बीच रन मिलेगा नहीं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त स्कूप कर दिया है, गेंद जाती है बैकवर्ड थर्ड मैन पर, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, वहां पर रोका गया गेंद को, लेकिन इससे पहले कि गेंद को रोककर थ्रो कर स्टंप सेंटर पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗಿದು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ गेम एंड स्टिल द बैटल इज नाउ ऑन. रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ओवर द विकेट, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाईनाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच पॉइंट का इशारा. 1+1 2 गिफ्टेड रन्स एडेड इनटू द अकाउंट ऑफ जॉली फ्रेंड्स. इस वक्त जॉली फ्रेंड्स को रन चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं इस वक्त उनके लिए जरूरी नहीं है और मैदान पर कुछ हलचल इस वक्त मच रही है. और जहां तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि मैदान पर यहाँ पर क्या हो रहा है. तो इस बीच मैच आगे बढ़ता हुआ और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त रियाज तैयार. दाईनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद हल्के से पैरों पर टकराई, शॉट मिड विकेट पर रन लेना चाहते थे लेकिन अंतिम क्षण में अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 19 रन. एक बेहतर ओवर रहा जिसमें 5 रन बने रियाज के और मैं समझता हूँ सतीश 4 ओवर में 19 रन इस वक्त जरूर बन चुके हैं लेकिन ये रन इस वक्त काफी नहीं है. हालांकि पहले 4 ओवर के रन रेट को नाप तोल कर अगर देखा जाए तो बचे हुए 2 ओवर में एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है. तो कम से कम 20 से 25 रन यहां पर बटोरने के जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को यहां पर एक बेहतर स्कोर बेहतर टारगेट प्रदान करना है एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों को. तो यहां पर एक और अतिथि का आगमन हो चुका है. जनाब हनीफ एचएस नजीर और जनाब नजीर बजाल और जनाब मोनू एमए जिनका आगमन यहां पर हो चुका है इसी श्रृंखला में और हम संगठक और सर्व क्रीडा प्रेमियों की ओर से उनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं. हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू सर. सो बैक टू दिस गेम 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और सतीश बिल्कुल यहाँ पर एनएम क्रिकेटर्स के गेंदबाज एक बेहतर लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए और बचे हुए 2 ओवर में जैसे कि मैं आपसे कुछ मिनट पहले फरमाया था कि इस वक्त 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन यहाँ पर बटोरने होंगे जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें चुनौती भरा लक्ष्य यहाँ पर प्रदान करना है. एनएम क्रिकेटर्स के लिए पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त नॉट क्वाइट मिडली गेट, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर. इनफैक्ट अजीम जो कि काफी देर से इस वक्त क्रीज पर टिके हुए अपने टीम के लिए एक बेहतर पारी इस वक्त खेलते हुए सामना करने के लिए तैयार. नॉन स्ट्राइकर पर इस वक्त अजहर मौजूद जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं फैजल, एक और बेहतर गेंदबाज एनएम मैंगलोर की ओर से और दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है. एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम जिसे कहते हैं और निस्संदेह दर्शक काफी उत्साहित होकर खामोशी के साथ इस मैच का आनंद लेते हुए और यहाँ पर गेंदबाज फैजल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाईनाथ के बल्लेबाज आजीम इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए ये गेंद इस बार आजीम के लिए कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर ज्यादा नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित, सही निर्णय अंपायर इकबाल द्वारा और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर कुल मिलाकर रुक चुका है इस वक्त 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. फैजल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अजीम के लिए गेंद को स्वीप किया, टॉप एज मौका लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त लंगॉन की दिशा में. ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता स्क्वायर लेग की दिशा में लेकिन गेंद बल्ले के बॉटम एज पर टकराने के बाद इस वक्त उछली हवे में और मिड ऑन फील्डर जब तक गेंद को चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसर्स अजहर फील्डर थे वो जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. रन से अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है कोशिश जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज की सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है. ये गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में रनों का खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. अजहर की पारी समाप्त. गेंद को ढकेला था थोड़ा सा वाइडर गेंदबाज के लेकिन गेंदबाज काफी फुर्तीले फैजल अपनी दाईं और तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए गेंद को फील्ड करने के बाद उन्होंने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और यहाँ पर अजहर की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है. कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 21 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और मैं समझता हूँ इस वक्त नीलाकाश तले बादल तो नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश लेकिन परेशानियों के बादल जरूर इस वक्त जॉली फ्रेंड्स के ऊपर साफ मंडराते हुए और
जहां तक रनों की गति को एक्सेलरेट करने का सवाल है, बढ़ावा देने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए चंद चौके और छक्के इस मैच में अपने रन की गति को बढ़ाने के लिए। तो अब तक एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों ने ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया है कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। ये गेंद स्वीप कर दिया, इस वक्त गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में और एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। और जहां तक सवाल है एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों का, अपने छाती के अनुगुण इस वक्त वो गेंदबाजी यहां पर करते हुए बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज उवैस, मेरे ख्याल से 19 इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और फैजल इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, ये जानते हुए कि उन्हें इस बाएं हाथ के बल्लेबाज है। एक फील्डर को इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर तैनात किया गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मौजूद, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात इस श्रृंखला के नियमानुसार एज फार एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न्ड। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो फैजल इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए 19 बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद फैजल की दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, बेहतर गेंद थी इस वक्त और इस बेहतर गेंद के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। सो 5 overs completed and now the scoreboard stays at 22 for the loss of 4 wicket। और सतीश, जहां तक का सवाल है एक धीमी प्रगति यहां पर 22 रन 5 ओवर में बन चुका है और अंतिम 2 ओवर में एक बेहतर कमबैक एनएम मैंगलोर के गेंदबाजों ने किया है और 4.40 प्रेजेंट फ्रॉम रेडी इज नॉट प्रोग्रेसिंग हियर फॉर देम। और अंतिम ओवर में जहां तक सवाल है तो कम से कम 15 रन जरूर बटोरने होंगे यहां पर जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक कुछ अच्छा खासा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। Well, exactly, Gopi, and just saying that there is a slow progress slow progress from the batsmen of Jolly Friends. Quite understandable, Gopi, because they're playing against one of the top team of South Kent district, NM Cricketers Mangalore. The pressure is always there. It's not like that you are playing in a semi-final, quarter-final. It's a total different game. And when you're playing against NM Cricketers Mangalore, I think, Gopi, it's not so easy. And all the NM Cricketers bowlers bowled very good line and line. Just like the batsman, not like that. The batsman is not trying for the acceleration. They're trying for the acceleration, but bowlers which is they are not really providing that opportunity to freeze their arm. But still, I think Gopi, the 1 hour which is going to be remaining in their innings, so they need to try for at least 10 plus runs here. Then only they can depend at order. They can be the feel that they can win the match. Otherwise, I think NM Cricketers might be the favorite of winning this prestigious Nethravathi Trophy 2022. बिल्कुल सतीश, जैसे कि आपने फरमाया पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहिए। जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइनली नो कॉन्टैक्ट between the bat and ball, and the ball went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. एक गेंद व्यर्थ और 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज अयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ, लेकिन 2 स्क्वायर जस्ट अ सिंगल has got that for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अजीम और 19 इस वक्त क्रीज पर मौजूद और अजीम आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक क्रीज पर डटे हुए सिंगल्स के रूप में रन इस वक्त बटोरते हुए और कुल मिलाकर इस वक्त गेंदे बाकी है जॉली फ्रेंड्स बजाल की बारी में सिर्फ 4। 23 रन बच चुके हैं, 23 for the loss of 4 wickets. Still the struggling time is now continuing here for the batsmen of Jolly Friends और अयाज इस वक्त ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते थ्रो पहुंचा, आसान सा रन आउट और इसी के साथ आजिम की बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। He just played that one with a twisted bat. गेंद हवे में इस वक्त थी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में पहुंचे, बैकवर्ड थर्ड मैन पर और बल्लेबाज ने दूसरा रन चुराना चाहा, कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अंतिम ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर, लेकिन दूसरा रन पूर्ण नहीं कर पाए। सीधा थ्रो पहुंचा डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर का विकेट कीपर मंसूर के हाथ में और मंसूर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया और बल्लेबाज अपने क्रीज से कोसों दूर रह गए। 1 रन का इजाफा 24 for the loss of 5 wicket with just 3 balls to go in the innings। 3 गेंदें अब बाकी, नंबर 6 बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, नंबर 7 बल्लेबाज कहना पड़ेगा, नंबर 7 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। ईशाम इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, सिर्फ 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और देखना यह कि इन 3 गेंदों में क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं इन 3 गेंदों में। और अयास
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, अपील, अप गोज द फिंगर, प्लम इन फ्रंट, एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। पहली गेंद पर इशाम की पारी समाप्त, ही इज आउट फॉर अ गोल्डन डक in his very first delivery, and one more wicket loss for Jolly Friends Bajal, and now they are 24 for 6. सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। शाम का वक्त लगभग 5:15 यहाँ पर बच चुके हैं और सूरज धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय करता हुआ, हालांकि धूप का अस्तित्व मैदान पर जरूर मौजूद है, लेकिन धूप का प्रकोप, धूप की तीव्रता यहाँ पर कम हो चुकी है और दिन धीरे धीरे शाम की ओर, रात की ओर इस वक्त बढ़ती हुई और इस ढलते हुए के साथ साथ यहाँ पर रोशनी भी कम होती नजर आती है और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले, मेगा फाइनल मैच यहाँ पर प्रगति पर। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद अयाज के हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए पॉइंट पर फील्डर थोड़े से पीछे, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 अप फॉर जॉली फ्रेंड्स बजाल। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर अयाज इस वक्त तैयार, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज उनैस इस वक्त सामना करते हुए। दर्शकों से खचाखच ये मैदान इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जंप पैक स्टेडियम और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला नेत्रावती ट्रॉफी 2022 जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके हैं फ्रेंड्स शांतिनगर। और अंतिम गेंद इस वक्त जॉली फ्रेंड्स की पारी का लेकर अयाज इस वक्त तैयार, दाहिना राउंड द विकेट, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड अ फैंटास्टिक ओवर हैज बीन केम टू एन एंड अयाज। सो द इनिंग्स इज अप एंड जॉली फ्रेंड्स बजाल managed to score only 25 for the loss of 6 wickets in their stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 26, and as far as the required run rate is concerned, exactly 4.34 runs per over they have to score for victory. 4.34 runs प्रति ओवर के औसत से रन्स बनाने 26 they have to score in their stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. और सतीश, जहां तक सवाल है 26 रनों का लक्ष्य कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है और यहाँ पर 26 रन, जहाँ तक एनएम मैंगलोर के सशक्त बल्लेबाजी का सवाल है, क्योंकि एनएम क्रिकेटर्स की बल्लेबाजी में जो गहराई है, डेप्थनेस है, उस डेप्थनेस को नाप तोल कर देखा जाए तो 26 रनों का लक्ष्य उनके लिए कुछ बड़ा नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज ए अनप्रेडिक्टेबल गेम, क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक आखिरी गेंद फेंकी जाए। और मैं समझता हूं जॉली फ्रेंड्स बजाल के गेंदबाजी में वो क्षमता, एबिलिटी है कि एनएम क्रिकेटर्स के बल्लेबाज को बांध कर वो रोक सकते हैं अब, लेकिन अपनी काबिलियत जितनी है उससे कुछ ज्यादा क्षमता के साथ उन्हें यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि पिछले मैच में रेड विंग्स कुंजत बेल के साथ उनका सामना हुआ था और रेड विंग्स कुंजत बेल के साथ उन्होंने उनके सामने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देकर उस मैच को उन्होंने जीता था। लेकिन इस मैच में यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस मैच में उनके खिलाफ है एनएम मैंगलोर, तो यहाँ पर एनएम मैंगलोर के खिलाफ अगर उनको गेंदबाजी उनको रोक कर रखना है 25 रनों के अंदर, तो निस्संदेह कुछ विशेष रणनीति उन्हें गेंदबाजी में अपनानी होगी। और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और देखते हैं जॉली फ्रेंड्स के गेंदबाज अपने इस प्रयत्न में किस हद तक यश प्राप्त करते हैं। फिलहाल इस नेत्रावती ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है फ्रेंड्स शांतिनगर ने, इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का अंतिम सत्र, द लास्ट सेशन ऑफ द मैच, एक रोचक क्रिकेट होगा और एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ माइक्रोफोन अब मैं आपके हवाले से होता हूं। माइक्रोफोन पर इस श्रृंखला में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. And you were just mentioning about that defending this total is not so easy. At the same time, Gopi, one thing to be noted, and here is Jolly Friends need to defend all 6 overs, not 5 overs. There is no direction of over, just like what they got in the semi-final. And out of that 6 overs, I think NM cricketers have to get, not from the 5 overs. That's why I think Gopi, Jolly Friends need to bowl out of their skin, isn't it? They need to perform best of their ability if they wanted to win the match. Just like you're mentioning about seeing the batting depthness of NM cricketers Mangalore is outstanding batting department, no doubt at all. But just like one thing I want to notice that you just mentioning about absolutely 100%. Cricket is unpredictable game. The cricket is a game of glorious uncertainty. Everybody knows that. And if you wanted to get that glorious uncertainty, Gopi, some uncertainty bowling which is required from the bowlers of Jolly Friends. At the same time, I think this man
who is just came into attack, Isam. He's got a lot of experience. If he able to get a good start with some 2-3 wickets in for just 2 runs, the gate will certainly will going to open for Jolly Friends. First ball, chip that one. Ball is in there, but out of the reach of that fielder at the deep long on. Once the batsman Asif Adur just chip that one, and it looks like it's going to be a catch there, but it's half-hearted chip, and I think Asif quite deliberately half-hearted chip that one. You know exactly there is a deep long on. If he hits one firmly, ball definitely going to land it to the hands of the fielder down at deep long on, so that he picked up a single. Now Mansoor is back into strike now. The Mansoor knows, everybody knows, he's a tremendous striker of the ball, and is in a power play now. Wait and see how we are going to take this power play. I don't think they will going to feel any pressure if it is a power play or not, but I think they need to get some runs less than the requirement of less than 5 runs per over. I think it's going to be a very difficult. Reverse stroke comes into play. One of his favorite shot. Ball running down to deep backward point boundary for 4 runs. The ball winning the race against the fieldsman. The 2 fielders behind the ball, chasing the ball, just like a cat chasing a mouse. But ball has at last winning the race against that 2 fielders. This is what the signature stroke of Mansoor. He's one of the best reverse striker of the ball. You can't get better than Mansoor if you take this reverse stroke. Even he's playing his first delivery. Look at the confident level. It's not so easy when you're playing his first delivery. Every batsman tried to middle the ball, middle the bat, but he's just wanted to play unorthodox cricketing stroke, and he played it beautifully down to the backward point boundary for 4 runs. Again, wide outside the line of off stamp, it's going to be a wide. Certainly, Isam started to feel the pressure after seeing that Mansoor going for some unorthodox cricketing stroke. He tried to defeat his bat, but by doing that, I think the ball just going further outside the line of off stamp, and scoreboard now moves on to 6 on the board. This time again, this is what you call the frustration and the pressure. Now straight away into is Isham. Even though Isham is having a lot of experience, but when you are bowling against a batsman like Mansoor Gop, it's not so easy, isn't it? Especially when one first ball which hit down to deep backward point with exquisite footwork and eye set what he's got, high hand coordination, certainly the key for that cricketing stroke there for Mansoor. And Isam started to feel the pressure, and scoreboard is 8 on the board. This time again, the next ball, a slower one, change of pace. This is one of the best weapon to use for the fast bowler, because whenever the batsman in aggressive frame of mind, if you bowl that slower one, that will definitely going to be more effective. As again, Isham, right arm over the wicket. This time Asif drives that on right in the gap. Chase here for the long on fielder. There, big yes and no hesitation for the run. Almost Mansoor is given up. He's given up. He thought it might be all over for him, but Isam couldn't manage to hit the stump, and Mansoor survived from that run out. That was a total misunderstanding between the wicket for the second run, because Mansoor thought that it's not really the good thinking to get any risky run here. That's why he's run very slowly. But his partner Asif Adur wanted a second, but Mansoor reacted slowly for that, but he survives. Again, appeal for leg before wicket. Umpire says it's inside edge of the bat. Directed coming from the wicketkeeper behind the stump. Tajuddin's it's a stump, but Mansoor is safe. But I think it's not a good start what Jolly Friends really looking for. We are talking about if they wanted to back in this game, they needed wicket, they needed one economical over, but we are watching is a total different game here. As NM cricketers Manglore, definitely they wanted to finish it off the things very quickly, because they got already 11 runs on the board in the first over without losing any wicket. The target which is at 26 and 11 which is deducted from 26, that means 15 more runs required for the victory, and they got a lot of deliveries for that. Again, going for the swing, but I don't think it's going to be any bat involved, but definitely it's going to be a leg involved, so that leg by called by umpire Iqbal. One more addition to total addition of that single. The first over completed. It is very costly over, expensive over. 12 runs came from that over, and Gopi, just we are talking about cricket is game of glorious uncertainty, but it says uncertainty is not regularly we are witnessing, but sometimes it's witnessing. But here I think Jolly Friends just missing that opportunity to get the good start. Now very difficult for them to come back this match. Scoreboard is 12 on the board. That means 14 more runs required for the victory. They got 5 overs to spare. 30 ball, 14 runs to win the match. I think NM cricketers are definitely there in a driver's seat of winning this match.
बिल्कुल सतीश, क्रिकेट इज ए अनप्रेडिक्टेबल गेम, लेकिन हर बार अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर एनएम मैंगलोर जिस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त पहले ओवर में उन्होंने की है, उससे साफ नजर आता है कि मैच को जल्द से जल्द वो समाप्त करना चाहते हैं। जैसा कि आपने फरमाया था, 14 रन अब चाहिए 5 ओवर में, और रिकॉर्ड रन रेट उतर कर आ चुका है 2.80 रन प्रति ओवर, 2.80 रन पर ओवर। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा जॉली फ्रेंड्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाज ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहता मंसूर ने, लेकिन यहाँ पर बल्ले पर गेंद नहीं आए, पैर पर गेंद टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंचे, 1 रन का इजाफा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। तो अब मैं समझता हूं सतीश, एनएम मैंगलोर आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। Absolutely, they're looking in right on top. Some miracle bowling, which is really required if they wanted to win this match. Jolly friends, and wait and see. Right arm over wicket balls outside. None of time going to be a wide, highly indisciplined bowling performance here from Jolly friends. When you are depending a small total, but here is a wicket is gone. Wicket is gone, but I don't think that wicket will go into impact anything about the result of this match. That because of their very close to the victory target. Now 14 for the loss of 1 wicket. Riaz back into Asif Adur is back into pavilion in the form of a run out, and replacing him is a new batsman just walking towards the middle is Zaid. And Zaid is a really good player. Actually, he played a very important innings for his team in the quarterfinal. I think so. He played a very good innings for his team, and now he's coming as a number 3 batsman for the side of NM Cricketers Mangalore. Some youngsters and new pace in NM Cricketers Mangalore. Definitely, it's not so easy to come and perform when you're playing in big teams. But this is a golden opportunity for the youngster to grab that opportunity to cement their place in the big teams like NM Cricketers Mangalore. Again, Shahil will go into ball right arm over the wicket again. That was a fantastic delivery in there. The good comeback here by the bowler, bowling a little bit outside and none of off stamp. Extra bounce in that occasion there for the bowler, so that the batsman completely missed out the delivery, and there is no chance at all for any run. 14 for the loss of 1 wicket. Again, bowler bowls right arm over the wicket, bowls again, that going to be a wide. What we're talking about, the discipline, what the bowler need to be there. If he bowls one dotted ball and one wide, there is no use at all, isn't it? It's absolutely no use at all. And again the bowler back to his bowling mark, right arm over the wicket, he bowls. Zahid the drive, going for the drive, wicket keeper not anticipating very well behind the stump. Tajuddin shying at the stump, but this time he's not really getting the result in the favor. One more addition to total the addition of that single scope on Namuzan to 16 on the board for the loss of 1 wicket. Look at the crowd here, Gopi. It's absolutely electrifying atmosphere out here in this most beautiful cricket ground. Look at the crowd. Doesn't look like it's a weekdays. It doesn't look like it's a Wednesday, but it looks like a Sunday. It looks like a Sunday. It's a holiday. Look at the crowd is gathered here. Absolutely, it is a fantastic scenario. And here is again left arm, right arm over the wicket. Mansoor is happy. He's just wanted to play the reverse stroke, but this time he missed it completely. But ball just deflected from his leg, so that leg by call by umpire. With that addition of that single scope Namuzan to 17 on the board, 17 for the loss of 1 wicket. Again the bowler Sahil, right arm over the wicket to Mansoor. Mansoor this time going for the big swing of the bat, appeal for cotton ball, the umpire unmoved, and Mansoor is also unmoved. If it is a have a bat, but definitely Mansoor definitely going to walk, because he's got that much of sportsman spirit, isn't it, Gopi? You were watching him and several times when it's caught behind the wicket or anything else, if he knows that he's out, he always respect, and it might be that Mansoor is still there in the middle means ball is just missing his bat. But Jolly friends, definitely they desperately wanted a wicket, that's why they're appealing, but appeal is going against them. Again now going for the big shot, again that ball is missing the bat, but wait for the umpire signal. Will it going to be no decision, that means from the bat, no, by call by umpire. Wicketkeeper behind the stump misses the ball. With that extra score, Namuzan to 18 on the board. 18 for the loss of 1 wicket. That means another 8 runs required for the victory, Gopi. And they got 4 overs to spare. The required run rate is 2 runs per over. Will you think anything is left in this game? But I think a little bit disappointment for the spectators, because Jolly Friends has got a lot of supporters. You can see that there's a home condition. They've got a lot of spectators which desperately wanted to see the Jolly Friends to be the winners. But against NM Cricketers Mangalore, Gopi, it's quite understandable that the performance is not really up to the mark in the final. Exactly, Satish.
सब लोगों ने इस वक्त अपेक्षा उम्मीद की थी कि एक बेहतर रोचक क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल एक तरफा मैच इस वक्त होता हुआ, प्योरली वन साइडेड मैच, और आसानी के साथ इस वक्त लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ एनएम मैंगलोर। अब सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं इस मैच में रह गई है, अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो। ओनली फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच, इफ एनी मिरेकल थिंग्स विल नॉट हैपन। तो यहाँ पर थिंग्स तो गेंदबाजी आगे बढ़ाते, एक्स्ट्रा क्विकर, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन इसका कुछ ज्यादा लाभ उन्हें नहीं होगा। तो यहाँ पर विकेट एक जरूर गिर चुका है सतीश, लेकिन एनएम क्रिकेटर्स अपनी मंजिल के अति निकट इस वक्त आकर खड़ा हो चुका है। Exactly, Gopi. They are very close to the target, and at the same time, Gopi, if these 2 wickets, Gopi, if they picked up 2 wickets, and that 2 wickets needed in the first over, and if it is a 2 wickets in the first over, and in just a 2-3 runs, which is the ball by Isam, just conceding 2-3 runs and picked up a 2 wickets, a different ball game. But now they're a little bit late. They picked up a wickets because the half of the job which is already completed. They're very near to the target, and scoreboard is exactly 19 on the board, and that means 7 more runs required for the victory. And but just considering the fact that the depthness of the batting department, what NM cricketers has Mangalore has got, even they're not feeling any pressure at all. But Isam they need to try his level best. At least they wanted to take this match. At least to the 5th over or 6th over, they wanted to take this match again. Next ball, nicely driven. Lack of placement. Ball is just went to the hands of a backup point fielder. The new batsman just came into middle. Riaz, outstanding tournament he has got, and especially in the big final, he's bowled very well. Picked up a 3 valuable wickets for his team. And now he's came into middle to just complete the formalities of victory for NM cricketers Mangalore. Again, lovely delivery in the head, beautifully bowled there by Isam, and Riaz just watchful in the dedication, knows that no need to panic at all. No need to panic at all. Just a 7 runs which is required for the victory. This over number 3 is in progress. Isam trying his level best to get one more wicket and one more dotted deliveries in this over. Again, going for the off-strike copybook style, but ball is not really coming to his bat as a ball is slower one. One more dotted delivery in the dedication, and score remains on 19 on the board. 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. After this 3 overs remaining, that means altogether in this particular over 1 ball remaining, that means 19 balls remaining. Again, wicket keeper behind the stump, Tazuddin in a fraction, just a blink of eyes, he completed the job, but is again unfortunately will not going to get the result for that. The batsman is safe. Good over completed by Isam after completion of over number 3, chasing 26 to become the champion here. NM cricketers Mangalore still not feeling a pressure here. 19 on the board, 7 more runs required for the victory in remaining 3 overs. Coming back to this cricket tournament, of course, this cricket tournament which is started in Saturday and continues from Saturday, then Sunday, and little because Sunday which is started, and then it's continued to Monday and Tuesday, and one more extra day which is today, the Wednesday. That means one more entertainment day for cricket lovers by organizers of Nethravathi Trophy 2022, and which is probably organized by friends Shanthinagara. And now we are in the big final, mega final. The hero of the previous match, the man of the match of the semi-final, Harris brought into attack, and wait and see how he will go into do the magic here. Can he able to do the magic here for his team? Need to pick the wickets, need to bowl one maiden over. At least the maiden over definitely going to change the complexion of this match. And again Harris right arm over the wicket to Mansoor. Mansoor this time wanted to swap that one. Wicket keeper behind the stump, Tazuddin, whenever needed a neat collection, he fails to collect the ball, but no signal coming from umpire. That means it's from the bat of Mansoor, inside edge of the bat, and so that scoreboard now moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 2 wickets. Just 6 runs required for the victory. One big hit will go into complete the job for NM cricketers Mangalore to lift the prestigious Nethravathi Trophy 2022. Again, right arm over the wicket, swept that one very nicely down to find leg region for a single. Now just 5 runs required for the victory. Mansoor is coming to NM cricketers Mangalore in this season, and definitely it's going to be for NM cricketers Mangalore to begin the season with a victory. Of course, they had missed the opportunity in Padav Trophy, which is played at Shanthinagara, but this time definitely they wanted to become the champion, and it is definitely going to galvanize the level of confidence of NM cricketers Mangalore if they are able to become the champion of this particular tournament. So one more single, with that single score moves on to 22 on the board. That means 4 more runs required for the victory. Again Harris right arm over the wicket, bounce again
Lovely delivery, beautifully bowled there by Harris. This is one of the speciality of Harris. Is bowl some slower one, mixing up the delivery very well. He's definitely going to be the future of underarm cricket. The way that he's handling the pressure, he's a very young age, and he got a lot of future. And he's bowling a very tidy line and length again. Harris bowls again left, went for the reverse stroke, appeal for leg before wicket. Umpire says not out. Leg by call by umpire. One more addition to total. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡದ ಖಾಲಿದ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ Harris balls, and again the wide ball. With that wide scoreboard numbers on 24 on the board. Just 2 more runs required for the victory. 2 more runs required for the victory to become the champion. And Khalid, I think, is a happy man and entering the ground in the right time. And just will going to witness when NM Cricketers Mangalore becomes a champion, and definitely going to be the first tournament of the season. They will going to become the champion. Now I think Harris thought that why to give the lot of trouble for the batsman. I will going to complete this job by giving the runs in the form of extra. Just 1 more runs required for the victory, and 1 more runs which is required for the victory. Scores are levelled. NM Cricketers Mangalore, just a single run required for the victory. But Harris this time saying that no, you're wrong, Satish. I will fight hard for this single run, and he bowled a dotted delivery. 4 overs completed. 4 overs completion. It's a 5 on the board, just a single run required for the victory. Just two overs remaining. There's 1 run required for the victory. But Bansur, I think, is an unlucky man because he's got opportunity to get the winning run. But I think this man, Riaz, is a lucky man because he's deserved that winning run because the way that he's bowled 2 very good overs for his team, picked up 2 valuable wickets. Certainly is the best man to get the winning run here. This time, the match will going to finish. NM Cricketers Mangalore are become the champion, and this is the first champion trophy for NM Cricketers Mangalore for the season 2022-23, and they become the champions of Nethravathi Trophy 2022, defeating Jolly Friends Shanthinagara by 8 wickets, and it's a comprehensive victory for NM Cricketers Mangalore. They played as per the reputation what they got, and unfortunately Jolly Friends, they really played a good game of cricket, but not quite enough to become the champion. But nothing to lose heart, they becomes the runners of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by Friends Shanthinagara in this red cricket ground here in Shantinagar, Faisal Nagar. So that's it for this cricket tournament and for the day. Congratulations for the winners. Congratulations for the runners up as well. So we are straight away going into the presentation ceremony. Till then we are saying goodbye from our commentary box. Yes, till then saying our goodbye from our commentary box. Thank you very much for the organizer. Thanks to Mansoor, the organizer of this fantastic cricket tournament, for this wonderful opportunity being the part of this cricket tournament. As a commentator, myself, Satish Salyan, and Mr. Gopi would like to give special thanks for the organizer and all the cricket lovers, the spectators, especially in this particular area. They showed a lot of love and affection and towards us, and thank you for your hospitality. And we are back once again in presentation ceremony. Till then, saying goodbye from our commentary box. Goodbye for everyone, those who are watching live telecast of this cricket tournament through the Bedra Media. The goodbye. Thank you.
Equalize. NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ 4 ದಿವಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ, ದ post match presentation ceremony. First of all, I congratulate the organizer first for organizing such a successful cricket tournament. It's a Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shanthinagara, and big round of applause required for the Mansoor one, who is leading from the front and make this wonderful cricket tournament a very successful one. It's a Nethravathi Trophy 2022. Thank you very much for Mansoor for his wonderful cricket tournament. First of all, I would like to invite the chief guest for this presentation ceremony, and I request first of all, it's the chief guest for this presentation ceremony. We have very respected Bajantri,
who is the Circle Inspector of Kankanadi. Sir, warm welcome for this wonderful cricket tournament. And I request Ayub, please honor him with the memento. And warm welcome, sir, for this presentation ceremony. The big hand for Bhajanji, sir, the Circle Inspector of Kankanadi. And thank you very much, sir, for your presence in this presentation ceremony. And next one, I would like to welcome Meryl Rego, General Secretary of Youth Congress. And I request Samir Shanthinagara to welcome him by presenting the memento of this wonderful cricket tournament, Nethravathi Trophy 2022. And we have a chief guest, one more dignitaries, respected Sunil Pujari, the President of Youth Congress. So warm welcome, sir, for his presentation ceremony. I request Jalil of Shanthinagara, kindly welcome him for this presentation ceremony. And we have one more chief guest, of course, our local corporator, and he is really supported for this cricket tournament, for the success of this cricket tournament. Big hand for Ashraf, corporate of Bajal. And warm welcome, sir, for this presentation ceremony. I request Niaz of Shanthinagara, please welcome him by presenting this memento and welcoming him for the presentation ceremony of this prestigious Shanthinagara Trophy 2022. We have one more big dignitaries out here, and my close friend as well, respected Vishwas Das. And I request Irfan Shanthinagara, please welcome him by presenting this memento, and is president of Congress City Block and City Block Manglore. So warm welcome, sir, for this wonderful function, the presentation ceremony. And next one we have Nazir Bajal. So warm welcome for Nazir Bajal. I request Hakim to come and present this memento for Nazir Bajal. At the same time, we have Asif Bajal and of Youth Congress. So warm welcome, sir, for this presentation ceremony. I request Iqbal Shanthinagara, kindly request you to welcome him for this post-match presentation ceremony. I request Circle Inspector Bhajan sir to have some word about this wonderful cricket tournament. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡುವಂಥ ಆಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟು. ನಾನು ಸಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು, ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದರಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಈ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you very much, sir, for your inspirational word. Certainly, it was cricket winning and losing is a part of cricket, but participation, which is important. And thank you very much, sir, for a wonderful word. And I forgot already. Actually, it was because of some urgency. And I welcome. And I welcome Khalid Bhai of NM Cricketers Mangalore for this presentation ceremony. I request Iqbal
to come and welcome him for this presentation ceremony. I request Azhar to present this memento for Khalid for this very good presentation ceremony of this cricket tournament. At the same time, I request Meryl Rego sir to have some word about this cricket tournament. ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಮೆಕ್ಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ 4 ದಿನತ ಮೂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಓ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಸಹೋದರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಶ್ರಫಿರನ್ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ದಾಸರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡರಾಯ್ನಂಚಿನ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದ ಮಾಲಕೆರಾಯ್ನಂಚಿನ ಖಾಲಿದ್ ಬಾಯಿನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಕ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ 11 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಜಾಲ್ ದಕ್ಲು ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಾಕಡಿ ಉಂತುದೇರು ಐಟ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಮ್ಜಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಸಹೋದರಿ ಆಸಿಫ್ ಬಜಾಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹರೀಶ್ ಬಜಾಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿಕ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ನನ್ನ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡರ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಹಜ ಆಂಡ ಈ ಸೋಲ್ದ ಬಕ ಗೆಲುವುದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂದಿನಂಚನೆ ಸೋಲ್ದವಲ ಗೆಲುವುದಲ ನಡುಟು ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆನ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಶಿಸ್ತಿದ್ದು ಈ 4 ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಜೋರಾದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮನ್ಸೂರ್ಗೂ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಬಾಲ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಕ್ರೀಡೆನು ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಂಡ ಒರಿಯೇ ಮೆರಿಲ್ ರೇಗೋಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒರಿಯೇ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒರಿಯೇ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಮನ್ಸೂರ್ನ ಪಿರೌಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಲು ಆರ್ನೋಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಪೂರಕ್ಲುಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆಡೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಇಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಕೂಟಾಗಿ ಈ ಸರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ನಮ್ದೊಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿನವರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ 4 ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂಥಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಟೋನಿ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿರವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಜಾಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸದಾ ಕಡಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆದೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರಾಡು ಮನ್ಸೂರ್ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯ ದೇವರ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬನ್ನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲೆ
ಎಂಕ್ ಪನ್ರೆ ಮರೆತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಾರ ಮೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟೇಟ್ರಿ ಏರೆಂದು ಸತೀಶ್ ಎರೆನ್ಲ ಗೋಪಿ ಅರೆನ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನನ್ಲ ಜೋರಾದೊಂದು ಚಪಾಲೆ ಗೊರೋಡ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ದೇಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನಿ ಗೌರವಧನ ಬಂದು ನಾಡ ಎಂಕುಲು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟೇ ಬಂದು ಪೋಪಿನ ಎಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕಲ್ನ ಮೋನಿಡ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿದ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನದೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಗ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕುಡರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವರ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಮೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪಿರ ದಯಪಂಡ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಆತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ದಯಮಾಡಿ ಅಜರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಜರ್ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇದರ ಆಯೋಜಕರಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಇದರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಿರಂತರ 4 ದಿವಸದ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ತನಕ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೆರಿಲ್ ರೇಗೋ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇರಿಲ್ ರೇಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಫ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಇಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಪರಿಸರದವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿರಂತರ ಬರ್ತೇನೆ, ಎಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದ ಹಾಗೂ ಸೋತ 2 ಟೀಮ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋತ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, 6 ಹೊಡೆದು ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದರೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್. ಆಗಲೇ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ಉರುವದಾರೇನಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಲೈವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅವರ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇರೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಂಟು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್
one more dignitaries for the stage. I request Mahandesh, police constable, please have the seat. ದಯಮಾಡಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಯಮಾಡಿ ಅಜರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. So now we are coming to the presentation ceremony, and before that, yes, I request Sunil Pujari sir to have some word for about this cricket tournament. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಗೌರವನ್ ಕೊರೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಅವಂದೆ ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದು ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನು 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಜೆತ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೆರಿಲ್ ರೇಗೋ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಿಡಂದೆ ಪಾತೆರ್ದೇರು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಪಾತೆರೆ ಎದುರುದ ನೆಂಬೆ ಅವೇನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೆಂದಿನ ರಡ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಿಲ್ ಆವಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಹೋದರತ್ವ
the best bowler of this tournament. ದಯಮಾಡಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯಾರಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. I request Ashraf sir, the corporator of Bajal, will go to present Best Bowler Award. It's a Kiran of Red Wings, Kunjat Bail. Next department, the Best Batsman of this tournament, which goes to, any guess? Only 6 haki best batsman finisher guarantee and run for the back of the match. ಆರು ಹೀರೋ ಅದು ಪೋತೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟೆ ತೆಗೆದು ನಾ ಕಿಸೇಕ್. So best batsman of this tournament which goes to Safwan of Jolly Friends. I request Karthik sir to present this the best batsman award to Safwan for his wonderful performance throughout the tournament. So congratulations Safwan for your wonderful performance in this tournament and deserve this best batsman award of Nethravathi Trophy 2022. Now we are coming to the one of the biggest award of the individual department. It's called as a king of individual department. That's why we're having a huge trophy for that department. That is the man of the series of this tournament. The man of the series of this tournament goes to, any guess? Yes? There guys. Mansur Padandulle, bowling, batting. Avu Apple lunch and man of the series tikku naklege. Those who are all-rounder, they got a golden opportunity to become the man of the series because they contributed from the bat, they contributed from the ball, and even they contributed in the fielding department as well. That is none other than Ayaz of NM Cricketers of Manglore. It's one of the golden moment for Khalid Bhai to present the man of the series for his team member. And Ayaz is a man of the series of this wonderful Nethravathi Trophy 2022. Ayaz, please come forward. So, Khalid Bhai having some few word with Ayaz, maybe the absolutely is studying that. Please continue that form in the incoming matches as well. Yes, that's all on this individual department. Now we are coming to the big department. The big department. Everyone is waiting for last 4 days to get this golden moment. The runner-up of this prestigious Nethravathi Trophy 2022, which is proudly organized by Friends Shanthinagara under the great leadership of Mansoor and Azhar Faisal Nagar. And a big hand for Mansoor and Azhar Faisal Nagar for wonderful cricket tournament. I request all the team members of Jolly Friends Shanthinagara to come and collect your medal from our chief guest Sunil Pujari, and all the guests, please present this medal for Jolly Boys. Pudar matra eddadittir Jolly Boys bandu full jolly idugobodir. Ini full jolly. Kise kaali apna mutta jolly. So, big hand for, yes, runner-up, the youngsters and some experienced campaigner. The very good performance there from Jolly Friends. Wonderful performance. Not so easy to become the runner-up. They played a magnificent game of cricket. And they of course faced some hurdles. But they won the heart of cricket lovers. And they deserve this runner-up of this prestigious tournament. ದಯವಂತದ ಅಂತ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ ತೋಜೋಡ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್ ತೀರ್ಥ ಕುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥ.
So welcome back and congratulations. Chappale Barli, runner up ge. Jorda. Yes. Chappale kode 6 hakna bayidende. Aitu chappale jogal yes. So congratulations for Jolly Friends becoming the runner-up of Nethravathi Trophy 2022. And we are coming to the big one. Of course, NM Cricketers Mangalore, one of the top team of South Kent district. When they came into this tournament, they know that they need to see that one because winning start is always going to give a lot of confidence for the big teams. And before I will go to Khalid Bhai, just have a few word about this tournament and just few word because your team has become the champion and any suggestion you want to give about this particular tournament. First of all, I thanks Satish and your organizer who have given me an opportunity to speak something. First of all, I congratulate both the teams, NM Cricketers, and also the Jolly Friends. Jolly Friends ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ NM ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ 2 years ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೋತಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನೀವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋತು ವಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ನೀವು ಸಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೋಫಿ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ್, ಇವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾನು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಜಾಲ್ನ ಹೆಸರು ನೀವು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 1 lakh rupees ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 to 4 days, ಓಕೆ ನೀವು 3 to 4 days ಅಲ್ಲ 1 week ಸಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತ್ರ ನೀವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹತ್ರ, ನೀವು ಇದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ನಾಳೆ ಉರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಬಜಾಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಕಾಯ್ಬೇಡಿ, NM ಸಹ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೋರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಟೀಮು ಸಹ ಆಗಲಿ, 5 to 10 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಓಕರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಕಾಯ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಓಕರ್ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಇದೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೋಫಿ 2022. So Mansoor is the one is just first receiving the medal, then captain of the side of NM Cricketers Mangalore. Atif is a successful captain. The winning is first trophy of this season for NM Cricketers Mangalore. Atif, the captain of the side, and we have Mansoor senior, Asif Addur. Almost we can see the dignitaries, Jaiz, the new face, Ayaz, the Faisal. Now it's going to be a presentation of the champions of Nethravathi Trophy 2022 and Friends Shanthinagara presenting this the wonderful cricket tournament and which is on by NM Cricketers Mangalore, the champion out here. So congratulations NM Cricketers Mangalore for your wonderful performance. The very attractive trophy, along with this, the cash prize of 1 lakh cash prize, the huge prize money for NM Cricketers Mangalore. Thank you very much. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು
ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬೀಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. That's it from the presentation ceremony and we are saying goodbye. Thank you very much. Thanks a lot.